Start, sir. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूं ही नहीं मिलता मकाम, यूं ही नहीं मिलता मुकाम, उन्हें पाने के लिए चलना पड़ता है। इतना आसान नहीं होता कामयाबी का मिलना, इतना आसान नहीं होता कामयाबी का मिलना, उसके लिए किस्मत में भी लड़ना पड़ता है। इट्स माई प्लेजर टू वेलकम you all, respected guests, dignitaries, and participants in the opening ceremony of International E-Conference on Recent Trends and Research Methodology in Arts and Humanities, organized by IQAC, Department of Geography and Social Science of Solapur Social Association, Arts and Commerce College, Solapur, Maharashtra State, India. Respected chief guest and keynote speaker of this inaugural function is Dr. Praveen Saptarshi, visiting professor, Salabur University, USA, and respected president of inaugural function, Honorable Dr. I.G. Tamboli sir, principal, Solapur Social Associations, Arts and Commerce College, Solapur. I, Dr. Deepak Narayankar, on the behalf of IQAC, Department of Geography and Social Science of Solapur Social Associations, Arts and Commerce College, Solapur. Welcome you all once again for the inaugural e-conference. Moving ahead, in our Indian culture, a warm welcome is the first sign of hospitality. Now, I request Dr. Sachin Rajguru sir, convener of this conference, to deliver the welcome address. Dr. Rajguru sir. Hello. First, in overall our mother tongue, आगतम स्वागतम सुस्वागतम। मैं सभी लोगों का आमीन गहराई से इस्तकबाल करता हूँ। खुशामदीद, खुशामदीद, खुशामदीद। I heartily welcome you all participants, all delegates, professors, and research students. We are joined occasion of the International Conference on Recent Trends in Research Methodology, Art and the Humanities. In this international conference organized by Social College, IQAC, Social College, Geography Department and the Social Science Department. The chief guest of this international conference, Dr. Praveen Saptarshi, the visiting professor, Sanborn University, USA, and also another resource person, Dr. Advitot sir, head of department and in-charge principal, CB Khedki College, Akkalkot. Next resource person, Sunil Kumar Manas, the head of department and professor of Hindi, Bauddhin Arts College, Junagadh, Gujarat. And our next research person, Dr. Yogesh Kumar Tiwari, professor, Pandit Shambhunath Sulak, Shakla University, Shahajal, Madhya Pradesh. And our next chief guest, Dr. S.D. Shinde Madam, Assistant Professor in Geography, Shivaji University. Also, the chairperson of all the sessions, Dr. Dept sir, Professor in Sociology, Sangmeshwar College, Dr. Sangmeshwar Neela, Professor in Political Science, Walchand College, Dr. B.B. Rao, Associate Professor, Department of Geography, Vasundhara College, Dr. D.S. Harwalkar, Assistant Professor, Department of Geography, Mauli Mahavidyalaya, Vadala. All of these I welcome to this international conference. Then our principal of the college, Dr. I.J. Tamboli sir, IQAC coordinator, Dr. J.K. Mullah sir, and organizing committee of this international conference, Dr. A. Gadwal sir, Dr. N.A. Kakade madam, Dr. M.A. Chowdar sir, Dr. A.S. Khan, Dr. G.M. Sheikh sir, Dr. M.K. Sheikh, Dr. D.S. Narayankar, Dr. T.V. Ladakh,
Dr. M.D. Sheikh, Dr. Y.S. Pathan. For all these organization committee, I heartily welcome to this international conference. Thank you. Thank you. Thank you, sir, for your warm welcome. The role of conference is together, like-minded individually from across the country and across the globe, to learn, discuss, thought, share, and create new ideas and ignite the motivation. The benefit of attending conference are different for everyone. Then I request to Dr. A. Gadwal sir, Head, Department of Social Science and co-convener of this conference, to express his views about inaugural function, college and conference. Dr. A. Gadwal sir. Hello, good morning everybody. Dignitaries in their war rooms, delegates, research scholars and students. It gives me pleasure. Gadwal sir, open your video. It gives me pleasure to share the information of my college on this nice occasion. Our S.S.A. Arts and Commerce College was established by Solapur Social Association, the association of elite class of the minority community in the city of Solapur. The association, with an intention to give formal education to the student of minority community, has established an educational institution in Solapur city. Earlier to 1968, the city had no minority institution in the Solapur except run by the Solapur Municipal Corporation. With an intention to give formal education to the minorities, the association of the Solapur have established an Urdu medium school, and gradually the work of the association developed. Now we have 3 primary schools, 3 high schools, 1 college of education and 1 degree college learning arts and commerce streams. Our college is located at the heart of the city. It has established in the year 1978. Earlier it was affiliated to Solapur, affiliated to Shivaji University. Later our college is affiliated to Solapur University in the year 2005. The college has permanent affiliation to UGC and university under 12B and 12F. It has got the status of minority, particularly religious minority, in the year 1995. The admissions in the college are open for the students of all communities, religions and castes. It has the capacity to admit 700 students at degree level. English and Marathi are the medium of instruction in both the streams. Urdu is taught at the PG level. Our college has gone through 2 cycles of NAAC and we have got B+ respectively. Recently, our students have secured University Gold Medal at BA English, BA Geography and BA Urdu. We have a research center in Urdu in our college and also have research base in commerce, English, sociology, geography and Marathi. We have 200 NSS volunteers, 60 NCC candidates. We are known in the university for our monopoly in hockey and football and basketball. Our all faculties have acquired doctorate in the respective subjects and are working in various committees of the university. Our alumni are extraordinary. We have produced 15 CAs, 10 police officers, several lawyers, policemen. Our alumni are also in the administration of the city. 6 alumni are corporators in the municipal corporation and 1 alumni is the mayor of Solapur. Every now and then, our college organizes workshop, conferences, seminar to develop the research and writing in students and teachers. So it gives me pleasure to share one more information that our college is going to face 3rd cycle in the next few months. So this is why this is the brief introduction of my college. Now pertaining to the present conference, I would like to say that scientific research is the activity of man. Man is the most intelligent animal on this planet. He is more inquisitive towards the natural environment, social environment around him. He is curious and he is curious to acquire the knowledge of both the environments. He acquired the knowledge through the sense of organs. His reasoning, inquiries, investigation, experiments, exploration,
research attitude have acquired the knowledge. Such attitude of man has created his culture and civilization. Research and innovations are the base of civilization and culture. Every civilization and culture is developed on the basis of its research. Research is a powerful instrument for social change, social mobility, and development, etc. Research gives new facts, new concepts, new theories, new products, and everything new to the society. Research is for the comfort and development of civilization. So, research, there are researches in field of biology, environment, economic, sociology, defense, and administration also. Research is the scientific investigation of social facts. Research is undertaken to study the social problems. Research is a mission to answer the questions of the society. So, the intention of the present conference is to develop the research attitude in the student, in the teachers, and in the faculties. So, with these few words, I conclude my words, and I hand over the device to the organizer. Thank you so much, sir. When you are around the enormously successful people, you realize that their success is not an accident, it's about hard work. So now I call upon Dr. Nabha Kakade Madam, introduce today's chief guest and keynote speaker of this conference, Dr. Praveen Saptarshi, speaker of this conference. Madam, तुझा mic mute है. Madam, mic mute. Mic on करा. Yes. Good morning. I am profoundly delighted to take an opportunity to introduce the chief guest of inaugural function of the e-conference on research methodology organized by Social College Solapur. Dr. Praveen Saptarshi obtained his PhD and MSc in Environmental Science and presently Professor Emeritus Sustainability Management, Indian Institute of Cost and Management Studies and Research, Pune. Visiting Professor, Salisbury University, Maryland, US, and Coordinator, Study Abroad Course in India, Salisbury University. His teaching experience, including current year, is 48 years. He guided 51 students for PhD and 7 for MPhil. He sponsored 13 research projects and 14 consultancy projects. He has published 154 research papers in an international and national journals. He is an editor of 5 research journals and organized many conferences and seminars and workshops. He has been invited as a resource person in more than 100 conferences. He has experience of working as a member of university statutory boards in Pune University, North Maharashtra, Jalgaon University, Shivaji University, Kolhapur, Bharati Vidyapith, Pune, and also Nagpur and Mumbai. He presented papers in UK, Australia, US, Bolivia, Peru, Mexico, Germany, and Norway. His achievements have been recognized by many awards. Best Teacher Award from Pune University, Best Teacher Award of Pune Municipal Corporation, Best Teacher Award of Bharatiya Jain Sanghatna. UGC has appointed him as Emeritus Fellow of Department of Environmental Science, Savitribai Phule, Pune University for 2 years. His research interests include environmental problems in India, environment and sustainability, and geography and peace. Now, he has appointed as Professor Emeritus, Indian Institute for Cost and Management Studies and Research, Pune, from November 2018. Dr. Saptarshi, it is my pleasure to welcome you again. Thank you. Thank you, Dr. Deepak. Thank you, ma'am. We are indeed delighted to have a keynote speaker of this conference, Dr. Praveen Saptarshi, sir, visiting professor, Salisbury University, USA, is with us. I request to Honorable Dr. Praveen Saptarshi, sir, visiting professor of Salisbury University,
with us. I request you, Dr. Saptarshi sir, to deliver keynote address to the हॅलो राजगुरू सरांनी सांगितलं होतं की इनॉगरल स्पीच पण द्यायचंय 5 मिनिटं का नाही ते झालं ना हॅलो Yes, sir. You give 5 minute inaugural speech. Yes, sir. You can give. yes okay ladies and gentlemen, I am really happy to join with you, principal of this college, and all the organizing, especially Rajguru sir, my young friend, one who is heading the geography department, and other colleagues. It is really good to know that one college situated in Solapur is organizing this kind of event. It is the need of research activities has been explained by my previous speaker, and in his introductory speech. I also agree with him, 100% agree with him, and it is also the necessary to understand the recent trends, and recent trend is marked by interdisciplinary studies, and it is quite apt that your college has organized the conference on the theme of recent trends in research methodology and with interdisciplinary approach. And I know that the organizers include the scholars from the disciplines like geography, economics, politics, sociology, and also some science faculty. So this is really good that you are inviting papers from all the disciplines from science and social sciences, and geography is definitely, geographers are used to carry out interdisciplinary research, and that's why geography department must be doing very hard work. So with these words, I am really happy to announce that the conference is open. Ladies and gentlemen, now I can switch over to my subject, that is keynote address. The research methodology is nothing but how you arrive at the concluding remarks. So what kind of data you are going to collect? So I have seen many PhD theses of economics, politics, and this geography also. So most of the theses show that the trend is the descriptive one, and the description is supported by the logical discussion, and that is really good effort to carry out the research work. And there is a confusion among the scholars and also PhD guides that whether to take the small area or to take the big area. So if you see the scientific disciplines, you can find that the most of the scholars take up very small issue. For example, at micro level, coronavirus, what are the variants of coronavirus? What are their effects on human body? So all such things are not related to a maximum number of data. It is necessary for trial, you have to get thousands of examples, and then only you can. So that's why for vaccination, we have undertaken a lot of trials. So this is normally in scientific research, this is carried out. This kind of approach is adopted. It's at the same time in geography and economics and
in politics, political science and sociology, we can also take the case study approach. And case study approach is something like a recent one. For example, I have carried out one case study of the the of one tehsil, or you can say that the group of villages, some few villages, 10, 15 villages alongside of Bhima River. And I have found that in the last 15 years, the growth of sugarcane cultivation has been increased to more than 5,000 hectares in such small villages. Why it is so? So then the logic behind it, so this is because of case studies, I could understand that the lift irrigation schemes have been established. Why lift irrigation schemes have been established just 15 or 20 years back? Why not it was there in there for 30 years back? This is mainly because of, again, it comes to the policy decision. Policy decision was taken by government of Maharashtra to allow the farmers to take up water from the rivers. And that's why the people used to construct the jack well, and they used to lift the water. Then the technological leverage is also important. And that technological leverage is that the people can take up water, transport water from the jack well constructed alongside of river right up to 10 kilometers, 20 kilometers, 30 kilometers away from the bank of river. This is this kind of technology has been first demonstrated by the government of Maharashtra or government of India in the by the health department to provide good, safe water to all. So that's why I can say that the Bhima River water has been taken up right up to Karjat, Mirajgaon, right up to Sina Basin, to means almost 30 kilometers away from the bank of Bhima, to supply the drinking water facility in the Tehsil. So this means that the government has demonstrated how technology can be utilized for this. So here the technological intervention is also there. Technological development is also important. At the same time, the people get the money from the banks, means the financial support was given by banks, and everything was integrated. And then 15-20 years back, means the process was going on right from 50 years back. Then so you can find the success at the 20 years back, and then 15 years back, almost each and every. So what is the each and every farmer has started using the Bhima water. So now the same case study can be studied with different approach. Economist can study what is the gain of, or what is the how profitability of farmers has been increased, whether it is increased for small farmers or medium farmers or for the large farmers. Then the environmental economist will definitely try to find out what is the cost of environment, what is the environmental cost which is involved in the development of the farming sector alongside of Bhima River. Or environmental studies can also give us what is the impact of this. Now you can find that the impact of, in Indapur Tehsil, you can find that the soils have been polluted because of use of chemical fertilizers and use of the polluted water. So who has polluted
the water of Bhima. The Pune people have polluted. Then you can also study what is the problems of sewage treatment plants in Pune city, and that's why you can just find out, carry out survey and find out that only 10 to 15% of sewage is treated and the clear water is released to the river. Actually, what is the law? Law is that you are not allowed to release the polluted water either on ground or either on ground or in the river. So this is the Water Act of 1992 of Government of India. So it is not new thing. Whether this Water Act is being followed by the big companies, corporates, or the municipal authorities or not. So this is also the social problem. The sociologically, you can understand the why it is so, why there is no political pressure in rural areas to find out the right, you can say that the right way of clearing river. Instead, you can find that the Namami Ganga, Namami Bhima. So such slogans are given at political level. What is the ground reality? So this kind of research can be carried out by the interdisciplinary approach, taking into account ensuring the participation of economists, political science students, and also the geography students. So and sociology students. Then and then only you can also, if you carry out such interdisciplinary projects with the help of young students, when they become mature, they will be also become the expert in designing the survey activities and designing the research approach. So, my dear friends, I think that our research, I am not telling you some pedagogical change in pedagogy, but I'm just saying that the same pedagogy of political science, of economics, or sociology can be kept in mind, or geography can be kept in mind, and then only you can carry out innovative research. I will again explain one simple case study of one village in nearby in our Tehsil only. So what happened there? Alongside of Sina River, there are some eight villages in the drought-prone areas, and they have decided one fine morning. Now this is the political awareness. So how this participation of local people has been ensured. So this is again the question, research question in front of sociologists, in front of the sociologists can handle such questions. And those people started saving sand in all the nalas of their villages near Sina River. What happened? Now people are always, म्हणजे आता काय करतात, खोदकाम करतात. म्हणजे तो कोण आपला सलमान खान वगैरे, त्याची जी पाणी परिषद वगैरे, त्याच्यात लोक खूप आनंद मानतात. पण यांनी खोदकाम करण्याऐवजी वाळू साठवली. आवाज बारीक होतोय. थांबा, आलाय का? टर्न ऑफ झाला सर. आता येतोय आवाज? हॅलो.
Hello. Sir, yes, you are audible. Yes, sir. Yes, You sir. are audible, sir. तुमचं काय म्हणणं तुम्ही आहे? चालू आवाज केलं येतोय? तुमचं आवाज येतोय. होस्ट हा? येतोय, sir. छान येतोय आवाज आवाज. चार्जिंग केलं का हा, तुम्ही? हा. नाही मग मगाशी कोणीतरी म्हणलं आवाज येत नाही म्हणून म्हणलं का ते फोन दुसरं- कॉल आवाज ये नहीं सुना ये पेरेंट नहीं हो रहा क्या पता हा. अभी So- तो आवाज नहीं सर रहेंगे तो ओपन ही रहने दो। नहीं अभी जब मेरे को वो लेक्चर है ना क्या? अच्छा Okay, may I start? Hello. Yes, sir. You are You can, start, sir. You Yeah. can. So, sorry for the pause. I thought that somebody is calling me, but they might be conversing amongst themselves only. Okay. Dear friends, so I can tell you the name of that village near Mahi Jalgaon in Karjat Tehsil of Ahmednagar district. It is the core area of drought-prone area, drought-prone zone of Maharashtra. And what is the problem? Problem is drinking water facility is not provided to that particular village. And if provided in some villages, some places, some areas, that is based on the wells which dry up in December, and that's why since January to June, July, the people have to depend on tankers, tanker supply of drinking water through tankers. So they decided that everything. They decided, everybody in Gram Sabha, they have decided that we should not auction our sand from our village. So naturally, it was conflict. Some people were worried about the income of the Gram Panchayat, which will be reduced considerably. But some people explained them, even the persons like me also, explained them before 2010, we were pursuing them for almost 5 years before 2010. So we persuaded them that if you sell the sand, what happens? Now here comes the sociological aspect, that if you sell the sand, the Gram Panchayat income will be increased by some thousands of rupees. This may be awesome for your small village. However, the chain of supply of sand right up to Mumbai or Pune, so that chain of mafia can be strengthened. If you don't allow them at source, if you don't allow them this kind of mineral or minor mineral to excavate in your village, then you are the part of some action against the sand mafia. Then this was really appealing to many people, because sand mafia, they are not worried about sand only. Once they are with some weapons, they can tease the police, they can tease the law and order, they can tease the girls in the village who are visiting to Karjat for seeking the college education. So once mafia are developed, then naturally some goons are developed, gunda element is developed. So this is to restrict this, we can waive off our Gram Panchayat income of selling sands. Then people convinced, and now this is really some social structure you have to understand in that particular village. And then only the people started, then one village, then second village, third village, so almost 8-9 villages started not selling the sand. And now what are the results? What are the results? Results are that they have regained the groundwater, and now the well irrigation is sufficient to provide. But I don't have. I'm not just. I don't want to just throw the figures, but
you can see that in that case study, the previously no sugarcane was there. Now sugarcane is also there, but they have made a rule in the village in Gram Sabha that only 1 acre of sugarcane can be allowed to grow. And another thing is that you have to only dug wells can be used for supplying irrigation to the agricultural fields. The bore wells are used only for drinking water purpose. But now you can say that the handmade pump, the hand-driven pump, is also there to fetch the groundwater, and it lasts throughout the year. So this means that it is the program of uh, uh, freedom from tanker affected villages. So this is it not sociologically important? Is it not economically important? Is it not geographical important? Is it not environmentally important? Is it not related to sustainability of the village livelihood? You can explain it in English, Hindi, or Marathi. This kind of research is such a research which is really innovative, really interdisciplinary, and even if you write it in Marathi, it can have the publication value. So don't be shy about your expression in English. Language is not at all a problem. You can learn language, or you can at the most I can say that if at all you are insisting that my paper should be in English, so I will make it in good English. Don't worry. Don't pay $100 to Springers. Springers demands the $100 for improving English. So my dear friends, so such case study approach is something innovative approach in the line of interdisciplinary research. Another thing that for innovative research, I would suggest that you should do that. There is no shortcut in surveying activities. There is no shortcut in understanding the people. So another innovative approach is that the people always say that statistical methods are there, data collection is there, and anybody, one who can speak on dais, can easily say that how can we believe in government data. सो म्हणजे अगदी गव्हर्नमेंट डेटाची खूप टिंगल केली जाते. गव्हर्नमेंटचा डेटा म्हणजे काय हो, त्याच्यावर तुमचा रिसर्च अवलंबून आहे असं करून कधी कधी मोठमोठे अकॅडमिशियन्स तरुण पोरांना खाली मान घालायला लावतात. पण त्यांना डायरेक्ट विचारा तुम्ही की व्हॉट इज द अल्टरनेटिव्ह. इफ सेन्सस इज नॉट देअर, then what is the alternative? Are you going to count the houses and the heads of the people in a village? No, not at all. You have to depend on government data, and there are ways and means to find out the errors in government data. So statistically you should be well equipped to find out the errors, and if errors are less than 1%, then don't worry about it. Another thing is that the people always discuss and oppose when at the time of PhD viva that how many sample size you have how many samples you have surveyed, and samples means people say 100. Oh, 100 samples, and you are applying your results to the thousands of people or lakhs of people. So how sample size can be decided? There is a statistical method. So that statistical methods you have to, I will just explain in the form of the analysis of variance. If you take first sample, and if you think that the average of first sample is some x1, right? Second sample, x1 plus something. Third sample, x1 minus something, x1, x1, x2, x3, x.
if you take 10 samples and found, and you can calculate what is the variance between the averages of the 10 samples. If that variance is limited, then 10 samples are also sufficient. Don't go for the 20 samples, 30 samples. So it is the technique that that is based on the concept of analysis of variance, and you can also reduce the sample size of your research activities. So another point that I would like to discuss with you is the in interdisciplinary research, you have to adopt the qualitative approach also. So quantitative approach, all of you know, but qualitative approach is not the, it cannot be considered as less important. But qualitative means your query should be apt, means perfect. Your query should be perfect. For example, if you are going to ask the tourist in, say, in Konkan area, what do you find the difference between Goa and Konkan? And then you can collect the information. So why you prefer Goa, even if it is costly, and why don't you visit the frequently in the along the coast of Sindhudurga area? Why it is so? So this can be a research question, and so around this research question, your query should be there, and if you find out certain factors influencing the coastal tourism in Goa and the coastal tourism in Sindhudurga district, then you can be in position to understand what should be done in the Sindhudurga area, in Sindhudurga district. So another thing that you should always see that your research should be useful for policy making, and this is something which can be considered as the useful research, or applicability of your research should be ultimately in policy making, government policy making. For example, I will just tell you one age-old thing. Means in 1977, just we had been to jail in emergency for 1 year, more than 1 year. So that's why we had some political say, and we carried out the research on the basis of supply of water to the farms. So we have seen that the groundwater levels have gone down. In 80s, if you observe even today, if you observe the groundwater levels have been declined in the irrigated areas. If you just correlate that the groundwater levels, average levels of villages, and the irrigated area, percentage of irrigation in that particular village, you can find that there is a positive relationship. Means more the irrigation, more is the declining water levels, depth of groundwater. Now you can observe that in your Sholapur district, those tehsils which are having irrigation more than 40% areas are irrigated, 40% fields are irrigated, then you can find that in those villages you can see that the groundwater level has gone down. Why it is so? At national level, you can find that the groundwater is lowest in Punjab, Haryana region, because the percentage proportion of irrigation is very, very high. In Maharashtra, Kopargaon, Shrirampur, Baramati, so these tehsils show very low
groundwater level. And this is mainly because of irrigation. Now you will understand, you may consider that this is a foolish argument. Yes, it appears to be foolish. For me also, it was, I felt it is something nonsense. But then I went to such villages and found that what happened, why people are taking. So that's why I stayed there in Shirampur Tehsil for 1 week. Another thing is that when you want to carry out research in agricultural sector, in rural development sector, in the tribal development sector, my dear young geographers and young economists and young students of political science, please, please, please stay there at least for 1 week. I have stayed in Dang area to understand the, I have also stayed for 15, I think more than 1 month in Ahupe and on the plateau of Pain, just to find out the what is the culture of the tribal people and what is their mindset to for the technology and all these things. So that's why I think that unless and until you stay there, I stayed for more than 1 year to find out the milk production, how crossbreeding program is useful for the rural people or farmers or not. Then I came to know that if you go to dairy farming areas, you can find that the cows and buffaloes are quite healthy, right? Big cows are there. They, you can fetch 30 liters of milk every day from such cows. What happened to the children of the farmers? The kids of the farmers are something like you can skinny, or they are malnutrition. They are suffering from malnutrition. Why it is so? This is a sociological question. This is the question of cost. Even commerce people can help us to find out what happens to the money earned in the milk production by the farmers. So these are the, so that's why it is necessary that you should stay there. So in the irrigated areas, I stayed for 1 week and found that what happened, what is the attitude of people. Once they get the irrigation water, almost free of charge, flow irrigation was there, and naturally anybody can think that once the fields are flooded, naturally percolation will increase and the wells will be recharged. This is not happened. Why? They get the sugarcane production, they get more profits in those days in 80s, and that's why their purchasing power has been increased and they used new technology. And in 80s, you can remember that Japanese and Tatas have brought some machines, bore machines. Now Falkland is there, but bore machines were there, and the bore wells were constructed in huge quantity, in huge numbers. You can see the data and find out how the sharp increase in geometric proportion, increase in number of bore wells can be observed in geometric proportion since 80s. And this is responsible for reducing the groundwater. What happened? Generally, the groundwater in that particular area is around about from 40 feet from the surface to 100 feet. But bore wells are 500 feet deep. So what happened? That water has gone down and then that has been taken up. Now here is the sociological issue.
This means that who can construct the bore well which is more than 500 feet deep can fetch the groundwater, and the others who have got dug wells of 100 feet deep, they will lose the water resource. So, is it not the process of diverting this precious common meant for common people, this precious the well water resource to the rich peasantry who are enjoying the benefits of canal irrigation? So this is the political issue. This is the sociological issue, and you have to tackle that issue. And environmental problems have been created because of that social political issues. And this is you can also support it by quantitative data, but you can also find out qualitatively the how water quality has been decreased because of the excavation of water or just pumping out of water through bore wells. And that's why in Hivre Bazaar, we have decided that the no well, or even in Mahijalgaon, no bore well can be used for irrigating the agricultural crops. The only dug wells are allowed to get the water for this water for agricultural or crops. Another thing is that it is very difficult to find out the example of any village the which is really following the optimization of water resources. So we have developed one model. My young students have also developed, now they are also quite senior, but they have developed, for example, Dr. More, Dr. Sonavni, or Dr. Vijay Bhagat. So they have developed one model that which I have called as the optimization of water resources for agriculture. This means that the water is measured, what is the available water and what is the utilization of water. If the available water is less than utilization of water, then the water index is negative. If it is positive, then no problem. But we have seen that most of the villages show negative water index. So negative water index means you have to either improve the water resource, which is not in your hands, but you can also reduce the 10% of sugarcane. So 2% of some banana, the crops like, means the crops which require more water can be reduced and more seasonal crops can be taken. But we haven't stopped here. We have also carried out cost benefit analysis in those villages and found that instead of sugarcane, if you take hybrid jowar in monsoon season, then wheat in post-monsoon season, and then if water is available, then some onion or vegetables in other seasons, your profitability is certainly more than the sugarcane. So this means that you are using less water and profitability is more. Another thing that we have, sociology students, please listen. Another thing we have found that marginal workers are there in the proportion of marginal workers is very high in those some villages, right? So this means that what is marginal worker? What is the definition of marginal workers? Again, census definition is that those workers who could not get the at least 180 days of work in a year, in last year. This means that the half of the year they are unemployed. So this is the measure. In some villages it is 6%, it is 7%, 5%, 4%. So these are
not the cultivators. They are neither cultivators nor the workers, the landless laborers. They are marginal workers. Means they don't have land of their own, number one. They are landless workers, but those workers who are not getting the work at least for 6 months in a year. So this is really a poverty. So how you can strike this problem of poverty? So then we provided that. So what is the attitude of people, those who are sugarcane growers? Sugarcane growers are very happy to say that the labor is not required. So for winnowing or for land, so everything is done by tractors, and the it is not the sugarcane is म्हणजे मराठीत आपल्याकडे म्हणतात टिपर लावायचं आणि गावोगावी हिंडायचं राजकारण करायचं. So this is very easy to irrigate, easy to harvest, and harvesting is done by, and another thing is that there is a political structure, strong political structure of sugarcane. But now the sugar industry is facing a problem, and that's why people are ready to switch over from sugarcane to other. So then this can be the political opportunity, and you can carry out some experiment. You can become social worker. So unless so another thing is that if you want to a very good researcher, please be a social worker. Then and then only it can be possible. So then you can find out what is the sociological process for acceptance of some new ideas in the rural areas. This can be understood. The sociologist can definitely understood how diffusion of ideas can be done. Even political science students can also help us in understanding all such things. So this is, you can in this way, this model of optimization of cropping pattern for more profitability, for more employability. In sugarcane, employability is less, but here employability is definitely improved. And that's why if the workers, there are 6%, more than 4% of marginal workers, then you just imagine how many people require the employment in the post-monsoon season and in the summer season, in winter and summer season. So this is required. So my dear friends, so this can be innovative research. Then and then only you can write the results in English or Marathi or Urdu or Hindi. So those will be picked up by the government for policies. So I was telling you why. So then when we studied this, so we found that the irrigation should be provided to all, maximum people. This was social aspect, and that at that time Pulot government was there, and they have accepted the fact that the no new irrigation project will be providing 12 months irrigation, only 8 months irrigation, protective irrigation. So naturally, if you just irrigate 1 acre, 100 acres, and if you design the project for 100 acres for 12 months, the same project can be utilized for 4 times of that particular the same project, same cost can fetch the irrigation facilities for 4 times more, means 400 acres of the area. So this is so simple. Instead of introducing drip irrigation system, instead sprinkler irrigation. So I am great admirer of drip irrigation and sprinkler irrigation, but that is capital intensive measures. Means you have to spend more than 1 lakh per hectare for
installing drip irrigation. And another thing is that there is a lot of risk which lies not at the bank but at the farmer's end. म्हणजे ड्रिपचं चोकअप झालं, त्याच्यात काही प्रॉब्लेम आला, त्याच्या नळ्या बदलायच्या झाल्या, तर ड्रिप इरिगेशन सिस्टीम विकणारा माणूस किंवा त्याला कर्ज देणारा बँकेचा माणूस हा सेफ असतो, नुकसान शेतकऱ्याचं असतं. Yes, another point so instead of giving that much inputs, you can just at the policy level you can say that the no irrigation project will be provided, government irrigation project will provide the water for 12 months irrigation, but for protective irrigation. So this is the important thing. And so another point that I would like to discuss is that if we carry out the risk analysis is another thing. So if you design your research project, so please add some risk analysis approach. Risk analysis means, for example, the farmers are given some inputs by the government. And who shares the risk? Take the milk production. Milk production, you can get the finance from banks, you can get the veterinary services, and so many things are there. So this is something cash flow, means whatever farmers have earned, more than 70% of money goes to the veterinary services, banking services, then the transportation, then the purchase of concentrate feed, means goli paint, right? So, pashu ahar, sakasa pashu ahar vagere. So this means, and what is the risk shared by गाय मेली तर त्याची risk कोणाची? The 100% risk lies with the farmer. Bank won't say that the cow is no more, so we will waive off your loan, or the dairy wala will not give you money for your death of your cow. No compensation will be given by dairy, by the Katras dairy, cooperative dairy, or the big custodians which are placed in Mumbai and Pune. So they will also not worry. They will also not worry about your death of cow or anything happened to you. So this is, so that's why there is, you can say that the more than 50,000 farmers have suicided. Means the 50,000 suicides have been happened in last 5-6 years or 10 years. So you know that the one person, the psychologist, can also participate in the project. This, what is the psychology? It is said that if 20 persons are thinking of doing suicide, then only there is a 5% probability that he or she will be successful in successful means it is the statistical word, success of the probability. So success is 5%. This means that 50,000 into 5, this much people are suffering from something which is diverting them for suicidal death. So this is something dangerous thing, and sociologists and politicians should carry out the research on this. There are so many government commissions. Even my friend has also studied from economist. He has studied it, and it is really the report is such a useless report. Doesn't embrace the realistic realities in that particular village. So
this is really the false reports are being prepared, and that's why it is our duty to find out the real causes of the farmers' suicide. Then and then only we'll be in position to understand the issues. So, my dear friends, you have to identify the issues. For example, in urban areas, we have identified the issues of the construction of building, construction of the concrete roads. What is its impact? This is called, as in urban geography, it is called as sprawl, urban sprawl. So what is the impact? So you can find that the bottled water business has been increased because no water is there, no supply of water is there, and that's why this is the and another thing is that the bottled water has been reached to, PEPI has been reached to the villages, even in the Adivasi areas, tribal areas. This means that there is the encroachment of in the name of technology. आता एक लक्षात ठेवा, तंत्रज्ञान स्किल याच्याबद्दल खूप बोलबाला होतो. याचा अर्थ लक्षात घ्या. What is the hidden meaning of this? You allow us to introduce our product in the villages. म्हणजे आमचा माल तुमच्या घरापर्यंत पोहोचवण्याची ही एक व्यवस्था आहे. आणि ती व्यवस्था कोणती आहे तर आपल्याला लक्षात येतं की अर्बन एरियातला फक्त कचराच तिकडे येत नाही, इंडस्ट्री मधलं सुएजच फक्त तुमच्या दारात येत नाही, तर इंडस्ट्री मधलं प्रॉडक्ट सुद्धा तुमच्या दारात येतं. अँड दॅट्स वाय व्हेन आय थिंक ऑफ रिअल क्लायमेट रेझिलियन्स, म्हणजे क्लायमेट चेंजला उत्तर देण्यासाठी, सो क्लायमेट रेझिलियन्स I also adopt the approach of environmental justice, and that's why I say the farmers should come together, should be well organized as it is found in the. So I have explained this farmers agitation as jaivik असा मराठीत शब्द वापरला आहे. It is organically developed agitation. So this is the dire need of the time all over the world. So these corporates are encroaching the agricultural sector, rural development, urban development, and that's why. Do you know that in Pune more than lakh or 2 lakhs of flats or apartments are vacant? Still construction is going on. Still our culture says that, oh, this is my old house, it should be demolished and new house should be. It is called as redevelopment. So it is the encroachment of corporate bodies. So in rural development, in urban development, you should be in position to understand the corporate culture, corporate bodies. So the students of political science, the students of the economics, psychology, and the sociology should equip the students to understand this kind of encroachment. It is neo-colonialization, or it is you can say that it is not Rashtravad, it is against Rashtravad. आणि आपल्याला राष्ट्रवाद सांगतात, सायकोलॉजीच्या लोकांनी सांगा की ऑलवेज मिलिटरीच्या लोकांचं खूप कौतुक करणं, दिस इज अगेन द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेइंग द फुलिश राष्ट्रवाद. म्हणजे राष्ट्रवादाचा मूर्खपणा जर कुठला असेल तर मिलिटरीचं खूप कौतुक करत बसणं सतत. मग मिलिटरीच्या बजेटमध्ये पैसे खाल्ले तरी तो राष्ट्रवादीच मानला जातो, आणि राष्ट्रवादाने आपल्याला असं एक झिंग आणली जाते. सो माय डिअर फ्रेंड्स, all those corporates and the government which is supporting corporates, they see that the political economy is supporting the corporate. Political economy in India, in Pakistan, all SAARC countries is supporting corporates because they think जिथं बुद्धी कमी असते आणि बुद्धी कमी ठेवण्याची व्यवस्था केलेली असते. But we are academicians, we are not politicians. We should not be afraid of saying that this is a lazy model
of buying the corporate driven development. So at present, even after globalization, our development is with the corporate driven development. And what happens in Coca-Cola case, you all know. So, dear friends, we have to find out what is the encroachment by corporates in and please remember that all of us, means all professors or teaching community, is well paid. Our salaries are good enough. We are in the first 20% of Indian population. That's why we can be Americans in India. Do you agree this? But this हे पैसे आपल्याला कशासाठी दिलेले? This is mainly for desensitization yourself from reality. So we should remember our old days. Old days म्हणजे मी म्हातारा पांढऱ्या केसाचा म्हणून ओल्ड एज सांगत नाहीत. ओल्ड एज मीन्स युअर चाइल्डहुड. So you are earning this much money, you have become professor or associate professor. Some of you have become principals. But please remember, your basic education, primary education has been done in the Jilla Parishad High School, Jilla Parishad School. माझं तरी जगदंबा विद्यालय कर्मवीरांनी काढलेल्या रयत शिक्षण संस्थेच्या जगदंबा विद्यालयात झालं. त्याच्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या जीवन शिक्षण मंदिर राशीन या शाळेत झालं. So don't forget these things. Why you got education, basic education? This is because the welfare approach adopted by the then government after independence. And that's why when Nehru took charge as a prime minister, there was just 6%, less than 6% of literacy. Now literacy is certainly improved more than 10-15 times. So this means that the welfare approach is quite good, but welfare approach is totally demolished in the name of काय माहितीये का की इथं फुकट बसून आमच्या गल्लीत बसून लोक दारू पिता पिता किंवा चहा पिता पिता असं सहज बोलतात. फुकट कोणाला द्यायचं नाही, फुकट कोणाला द्यायचं नाही. आणि तुम्हाला फुकट जे मिळालं त्याचं काय, त्याचा कधीच विचार करायचा नाही. मला जे फुकट मिळालं त्याचा विचार करायचा नाही आणि फुकट कोणाला दिलं नाही पाहिजे असा एक फार मोठा चांगलं तत्व सांगितल्यासारखं सांगायचं. This is just nonsense. We are academicians. We should think all the sides, the government side, the opposition side, and then only we should think in realistic way. I conclude with saying that please please try to understand the realities through economic approach, commerce approach, environmental approach, or the geographical approach, and try to find out the solutions which can be useful at the government level for policy making. With these words, I again wish you all the best, and also I am open to the questions. Thank you. Thank you very much, sir. And now this is time to solve all our queries. If anyone have the question in your mind, you can ask to our resource person. If anyone have questions in our mind, you can ask to resource person. Hopefully I'm in time. Yes, yes. I think no one interested to ask questions. You can ask questions in Marathi, Hindi, कौन सी भी भाषा में बोल सकते हैं. उर्दू वो मुझे नहीं आती इतनी. Okay. Moving on, I now request the president of the function, Honorable Dr. I.J. Tamboli sir, Principal, Sholapur Social Associations, Arts and Commerce College, Solapur, for presidential remark. Dr. Tamboli sir.
सर तुमचा माइक म्यूट आहे सर. Good morning, all of you. Solapur Social Association, Arts and Commerce College, Solapur, organized by one-day interdisciplinary international e-conference, recent trends and research methodology in arts and humanities. Dr. Praveen Saptarshi, he may be mentioned scientific research, study approach, new technology, specifically research water purification and farms education. आणि त्यांनी महत्वाचा सांगितला तो मिलिटरीचा राष्ट्रवाद आणि आम्ही तर आणि पगाराचे महत्व याबद्दल मी डॉक्टर सप्तर्षी यांचे पुन्हा एकदा मी आभार मानतो. त्यांनी या इंटरनॅशनल ई कॉन्फरन्स मध्ये सहभाग घेऊन आम्हाला त्यांनी मार्गदर्शन केलं. रिसर्च सिम्पली मीन्स सर्चिंग फॉर दॅट विच ऑलरेडी एक्झिस्ट. When we talk of research methodology, we not only consider the research methods, but also the logic behind the methods we use in the context of your research study and explain why we are using a particular methods of technique. The subject modern trends in research methodology, probably a call of all scholars and students to familiarize themselves with the latest trends and tools associated with research methodology being advocated in the environment, in the context. As a standard operating procedure, one may be inclined towards an academic study by browsing through a long list of these trends. मुझे यहाँ ये कहना है, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, इस सेमिनार के अंदर दो महत्वपूर्ण विषय का चयन गठन किया है. इसमें आदिवासी समाज की स्थिति एवं उनकी सत्य स्थिति के बारे में संशोधन का इस निगम किया है. आदिवासी का संबंध जमीन और जंगल के साथ हुआ है. आदिवासी क्या खाता है, क्या पीता है, उसका जीवन का तरीका क्या है, जंगल से क्या नाता है, जंगल से जुड़कर वो क्या करना चाहता है, उनके रीति रिवाज क्या है, उनके धार्मिक रूढ़ी और परंपरा क्या है, इसके बारे में आज इस समारोह के अंदर, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर उसके बारे में चर्चा करेंगे. Is in every way as necessary and helpful to the study of social science, it is to that of natural science. Any discipline which claims our instant attention and has demonstrated its ability and potency will flourish and be effective and purposeful only if research is conducted in it. Without research, the depth of social science will not be increased by discovery of new facts, by new interpretation of the existing known. मुझे ऐसा कहना है की समाज के अंदर बदलाव लाना है, समाजामध्ये बदल करायचा असेल तर आपल्याला समाजाचा संशोधन करावं लागणार आहे, समाजाची सिद्धता आपल्याला करावी लागणार आहे, शेतीविषयीचं संशोधन करावं लागणार आहे, आपल्याला जंगलविषयी संशोधन करावं लागणार आहे, नवीन नवीन संशोधन पद्धतीचा अवलंब आपल्याला करावा लागणार आहे. न्यू अप्रोचेस, न्यू मेथोडॉलॉजी and experience social research encompasses scientific investigation conducted the field of social sciences. Science. Social research is a very broad category within which there are many subclasses to determination. Opposite trends are prevailing in social science research. One, the demand of social science research with regard to social problems is increasing at a faster rate. New facts of social problems may emerging. Secondly, the scale of social science research is inadequate and the same is unable to meet the criteria of quality and scope. Now, I once upon a time mentioned the social science research in India has had a checkered history, while the country has the highest volume of research in the region and is significantly ahead of other countries in South Asia. There is a wide disparity in research activity and output across the country, both in terms of quantity and quality. While a handful cultures which include disciplinary or interdisciplinary work, particularly kinds of expert knowledge and knowledge production with a focus on peer review and engagement with internal and external network
and learned societies. The quality of research in a large majority of institutions neither conforms or international academic standards, nor have they been able to make a significant contribution to social science. मुझे ये कहना है, समाज का संशोधन का एक नवा ट्रेंड समाज में आना चाहिए, समाज में एक नया उद्देश्य आना चाहिए। सप्तर्षि साहब ने बताया कि जब तक ग्रामीण भाग के अंदर, फील्ड के अंदर, पानी के अंदर उसका संशोधन नहीं होगा, तब तक समाज में बदलाव नहीं आएगा। समाज में चेंज आने के लिए ग्रामीण भाग के अंदर नवे संशोधन पद्धति का हम इंक्रीज करना चाहिए। और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि योगेश कुमार तिवारी ने इस विषय को अंजाम दिया है और उसके बाद समकालीन चिंतन और शोध और ताना बाना, ये इस विषय पर डॉक्टर सुनील कुमार मानस ने उनका वो संशोधन का उसके बारे में वो बताएंगे। तो मैं सबका शुक्रगुजार हूं और सभी पार्टिसिपेंट का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने हमारे इस सेमिनार के अंदर सहभाग लिया और मैं आपका फिर एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जय हिंद, जय भारत। Thank you very much, sir. We feel to have your inspiration and backing with us at all time possible. Without you, all this would not have been possible, sir. Thank you very much. Now, it will be my honor to invite the chairperson of this session, Professor M.S. Dept, for their chairperson views. Dr. Dept, sir. Sir, your mic is mute, sir. Please unmute yourself, sir. Dr. Dept, sir, unmute yourself. First of all, I would like to thank the organizer of the conference, Dr. Gadwal, sir, and principal of the college, Dr. Tamboli, sir, for wonderful opportunity. Respected keynote addressee, Dr. Praveen Saptarshi, sir. As we know very well, research is a major issue. Every scholar should give both qualitative and quantitative contribution in the research. So far that Dr. Praveen Saptarshi has given valuable time as well as research-oriented examples. He has highlighted on agricultural, rural, tribal area of research. He has given various examples. He has suggested research scholar should stay for 1 week to find out cultural and mindset of the tribal people. Future, he has suggested that research carry out such type of research issues related to agriculture sector, rural sector, water related issues, and his focus on sugarcane production is changed into grocery production because sugarcane required more water and sugarcane production reduces employability. So production will be changed, cropping pattern should be changed. He focus on various issues related to sociology, political science, various geography, focus research related issues, and he finally suggests that farmers should come together, organize again me. Thanks. Sir, your voice is breaking, sir. सर आपलं इंटरनेट कनेक्शन चेक करा. इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी लो आहे सर. जरा प्लीज चेक युअर इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी सर. Okay. Thank you very much for your chairperson, remarkable.
After the commanding opening of this session, I would like to continue the second session. Welcome back now. We are entering the second session of this conference. I welcome once again all of you in one day international conference. The resource person of this second session, Professor Dr. Sunil Kumar Manas, Head Department of Bahudin Arts and Arts College, Junagadh, Gujarat, and Chairperson of this session, Professor Sangmeshwar Neela, Associate Professor, Department of Political Science, Walchand College of Arts and Science, Solapur. Now, I request Professor R.Y. Mirza Madam to introduce the today's resource person and chairperson of this session. Dr. Mirza Madam. जी सर। सोलापुर सोशल एसोसिएशंस आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज सोलापुर एवं पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर विश्वविद्यालय सोलापुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन ई संगोष्ठी में उपस्थित सभी विद्वज्जनों का मैं शब्द सुमनों से स्वागत करते हुए उपस्थित मंच को अभिवादन करती हूँ। द्वितीय सत्र के प्रमुख अतिथि डॉक्टर सुनील कुमार मानस जी एक बहुचर्चित व्यक्ति है। उनका जन्म आजाद नगर बिंदकी जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश में 9 अगस्त 1983 में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा बिंदकी में हो गई। उसके बाद वे संस्कृत और हिंदी विषय में कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधियां हासिल की। डॉक्टर सुनील कुमार मानस जी ने 2009 तक वे 9 बार हिंदी विषय में नेट परीक्षा उत्तीर्ण हो गए हैं। मैं कहूंगी कि यह उनकी विशेष कामयाबी है और सराहनीय भी है। उन्होंने 2014 में हिंदू काशी विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की है। उनके शोध कार्य का मुख्य विषय है भारतीय स्त्री। यह भी उनका कार्य बहुत उल्लेखनीय है। सर जी ने अपने अध्ययन में 4 चांद लगाने के बाद वे लोक सेवा आयोग गुजरात से सहायक प्राध्यापक के रूप में 30 अप्रैल 1919 को चयनित होकर बहाउद्दीन आर्ट्स कॉलेज जूनागढ़ गुजरात में अभी वे कार्यरत है। डॉक्टर सुनील कुमार मानस अध्ययन अध्यापन के साथ साथ वे अनेक पत्रिकाओं के संपादक, उपसंपादक, प्रधान संपादक, सचिव, सदस्य ऐसे अनेक पदों पर आज भी वे सफल कार्यरत है। इसमें प्रमुखता से सृजनश्री न्यास के सचिव, आलोचन दृष्टि पत्रिका के प्रधान संपादक रहे हैं। वे डॉक्टर नगेंद्र, भारत और भारतीयता, भारतीय चिंतन के विविध आयाम आदि पर केंद्रित विशेष विशेषांक आलोचन दृष्टि का उन्होंने संपादन भी किया है। साहित्य वर्तिका के वे सह संपादक भी रहे हैं। डॉक्टर सुनील कुमार मानस जी का चर्चित एवं प्रकाशित पुस्तक है उत्तर आधुनिक हिंदी उपन्यासों में स्त्री विषयक चिंतन। उन्होंने अनेक शोध पत्रिकाओं में अपने शोधालेख भी प्रकाशित किए हैं। यहाँ पर सभी हम बताते हैं तो हमें समय ही हमारा खत्म हो जाएगा इसमें, इसलिए मैं इतना ही कहूंगी कि बहुत सारे शोध पत्रिकाओं में उन्होंने अपने शोध आलेख प्रकाशित किए हैं। इसमें मुख्यतः से संवाद, शोध, साहित्य वर्तिका, प्रज्ञा, अनन्या, विमल, विमर्श, आलोचन दृष्टि आदि अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिका में उन्होंने अपनी सफल लेखनी चलाई है। इसके साथ साथ वे राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियां, कार्यशालाएं, परिचर्चाएं आदि में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। यहाँ पर मैं समय सीमा को ध्यान में रखते हुए सर जी के व्यक्तित्व को लेकर अंत में इतना ही कहना चाहूंगी कि सर जी के लिए ये हुनर, ये सादगी, ये हुनर, ये सादगी, ये अपनेपन की मूरत नहीं देखी। ये हुनर, ये सादगी, ये अपनेपन की मूरत नहीं देखी। किरदार तो बहुत देखे, किरदार तो हमने बहुत देखे, लेकिन आप जैसी शख्सियत नहीं देखी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, ma'am. I request the resource person of the second session, Professor Dr. Sunil Kumar Manas, Head Department of Hindi, Bahudin Arts College, Junagadh, Gujarat,
to share his knowledge on समकालीन चिंतन शोध प्रगति का ताना बाना with us. डॉक्टर सुनील कुमार मानस सर। जी धन्यवाद। दूसरे सत्र की अध्यक्षता कर रही प्रोफेसर एवं डॉक्टर संगमेश्वर नीला जी, आभासी पटल से जुड़े हुए प्राध्यापकगण, प्रतियोगीगण एवं छात्रगण और संचालन कर रही मिस R.Y. मिर्जा एंड दीपक जी, जो मेरा विषय है वो समकालीन चिंतन और शोध प्रविधि का ताना बाना है। इसके पहले सत्र में प्रोफेसर एवं डॉक्टर प्रवीण जी सप्तऋषि ने बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान दिया। रिसेंट ट्रेंड एंड रिसर्च मेथोलॉजी पर उन्होंने विस्तार से चर्चा की और सोशल फैक्टर्स जो कारपोरेट जगत के कारण इस मॉडर्निटी समाज में विकसित हुए, उन पर एक गहन दृष्टि रखी और ये भी बताया कि हम लोग एक प्राध्यापक हैं और एक प्राध्यापक की गरिमा क्या है। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपका बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान रहा। मैं उसी कड़ी में सोशल फैक्टर से थोड़ा सा हटकर ह्यूमैनिटीज से जोड़ने का कार्य करूंगा, क्योंकि बहुत सी बातें उन्होंने कह दी हैं, अब उन्हें दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो मैंने विषय चुना है, समकालीन चिंतन शोध प्रविधि का ताना बाना, तो इस शीर्षक में ही कुछ बातें खुद प्रतीकात्मक रूप से निहित है। जैसे समकालीन चिंतन क्या है? एक जो कुछ हम समाज में देखते हैं वह सब समकालीन है। एक तो काल दृष्टि के आधार पर यह समकालीनता का बोध है। दूसरा, समकालीन एक दृष्टि है जिसके आधार पर हम अतीत से लेकर वर्तमान तक का निरीक्षण करते हैं, यानी कि आरंभिक अवस्था से लेकर अब तक जो कुछ हो रहा है उस पर गहन दृष्टि से चिंतन करना, ये समकालीन चिंतन की दृष्टि है। और दूसरा है शोध प्रविधि का ताना बाना। और इस समकालीन दृष्टि के आधार पर हम तमाम प्रकार के जो शोध कर रहे हैं, अब शोध प्रविधि पर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि उस पर दोहराना हो जाएगा, उसका जो ताना बाना जो बना हुआ है वो ट्रेंड क्या रह गया है, तो ट्रेंड की भी चर्चा काफी सबने कर दी है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो समकालीन दृष्टि है इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति T.S. एलियट ने कही थी कि केवल अतीत ही वर्तमान को नहीं प्रभावित करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। तो जो जैसा हम लगातार सोचते चले आ रहे थे या जैसा हम चिंतन लगातार हमारा व्यक्त हो रहा था, उसमें बुनियादी फर्क क्या आ गया है। एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक प्रकाशित हुई थी जॉक दरिदा की, राइटिंग एंड डिफरेंस, और लगभग इसी बात को हिंदी के एक महत्वपूर्ण साहित्यकार अज्ञे जी हैं जिन्होंने लिखा था कि भोगने की प्रणाली में जो बैठ नहीं पाता वही लेखन का विषय है। राइटिंग एंड डिफरेंस में भी यही है। और उन्हें एक और महत्वपूर्ण बात लिखी थी कि सृजन करने वाले कलाकार और भोगने वाले प्राणी में सदैव एक अंतर रहता है या रहा है, और जितना बड़ा कलाकार होगा यह अंतर उतना बढ़ता जाएगा। राइटिंग एंड डिफरेंस जॉक दरिदा की जो सबसे लेटेस्ट पुस्तक प्रकाशित हुई थी, लगभग 1990 के बाद वो पुस्तक आई है। उस पुस्तक में ये बात साफ लिख दे कि जो लिखा गया है उसमें भोगने वाले का दर्द कितना है, उसमें तो जिसकी ओर इशारा किया गया कि सदैव एक अंतर रहा है। अब हम इस अंतर को देखें कैसे। एक
धारणा भी है हमारे सामने, और धारणा भी कई तरह की है। जैसे कि हम जब अपने पहले के या आधुनिक से पूर्व चले जाएं, आधुनिक जब 19वीं शताब्दी के शुरुआत के पहले, तो हमारे यहाँ रिसर्च से जुड़ा हुआ कोई चीज नहीं थी कि रिसर्च हो रही हो, बल्कि कुछ चीजें प्रकृति से सीधे सीधे खोज की जा रही थी। ज्ञानात्मक प्रक्रिया रिसर्च नहीं, बल्कि जो प्रकृति में ज्ञान है उसी का शोध हो रहा था। ये जो रिसर्च है वह शोध किए गए कार्यों पर पुनः शोध करने की प्रवृत्ति, और यह लगभग 19वीं 20वीं शताब्दी से भारत में शुरू। इसके पहले थोड़ा बहुत पश्चिम में भी 13वीं 14वीं शताब्दी से ये जागृति आती है और वहां भी ये काम शुरू होता है। तो लगभग ये जो रिसर्च की मेथोडोलॉजी है, ये एक आधुनिकता की उपज है, चाहे वो भारत की हो चाहे वो पश्चिम की हो। इसके पहले अगर हम चले जा रहे हैं, किसी भी साहित्य या समाज की कोई भी विचारधारा होगी, उसकी अपनी एक अवधारणा थी, सत्यम शिवम सुंदरम की। और ये सत्यम शिवम सुंदरम बहुत बड़ा विस्तार है, मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है कि कैसे सत्य और शिव और सुंदर की ओर लोग बढ़ते हैं। और यही मुख्य धारणा कि हमें सत्य का पालन करना है, शिव करना है। शिव मतलब जो दूसरे का कल्याणकारी करने वाला तत्व है। एक तो सत्य करना है, दूसरा कल्याणकारी करना है, तीसरा सुंदरम हो, सुंदर भी हो। इसी 3 बिंदुओं पर लगभग हमारे वैदिक जागरण से लेकर के उपनिषदीय जागरण या महाभारत काल तक भी ये विचारधारा काम करती है। इसके बाद की अगर हम अवधारणा पर चर्चा करें तो 2 चीजें बहुत कारगर काम करती हैं। एक तो है शास्त्र, दूसरा है सौंदर्य। और सौंदर्य और शास्त्र को लेकर, एस्थेटिक्स और क्रिटिसिज्म को लेकर बहुत आलोचना हमारे यहाँ है। आइए रिचर्ड्स ने एक महत्वपूर्ण पुस्तक इसी पर लिखा था, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जिस पर उन्होंने इस बात का एक गहरा हवाला दिया है, रागात्मक तत्व को और तथ्यात्मक तत्वों को जोड़ा कि रागात्मक क्या है, तथ्यात्मक क्या है, रागात्मक को किस तरह से हमें देखना है और तथ्यात्मक दृष्टि को किस तरह से रखना है। इस पर उन्होंने गहरी चर्चा की है, मैं उस पुस्तक पर संकेत कर दे रहा हूं। और उसी के बाद टी.एस. इलियट भी हुए, जिन्होंने एक तो बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि कविता के 3 स्वर नामक उनकी पुस्तक है, 3 वॉइस ऑफ द पोएम। उसमें उन्होंने कहा था, पहला यह है कि लेखक खुद से बात करता है, दूसरा लेखक अपने पात्रों के माध्यम से बात करता है, और तीसरा है लेखक अपने पात्रों के माध्यम से बात करता है। और ये जो तीसरी दृष्टि है, जो हमारे शास्त्र या सौंदर्य की जो तमाम मीमांसाएं हैं, शास्त्र मीमांसा में बार बार करता हूं क्योंकि ये साहित्य शास्त्र भी है और जीवन का हमारे जो शास्त्रगत निरूपण है, वेद उपनिषद काल के जो एक रचे गए रचनाएं, उनको भी शास्त्र की दृष्टि से देखते हैं। इन दृष्टियों से जब हम इस चीज को या इस बात को देखते हैं तो उसमें भी तमाम बातें ये स्पष्ट हैं कि जो एक शब्द शक्तियां हैं हमारे यहाँ, शब्द शक्ति, लक्षणा, व्यंजना और अभिधा, तो जो हम सीधे सीधे बात करते हैं, यही चीज आपके टी.एस. आइए रिचर्ड्स में भी है कि सीधे सीधे बात करने वाली बातें लक्षणा होंगी, अभिधा होंगी, और अभिधा का कोई मतलब नहीं होता। सीधे सीधे बात कही जाए उसमें कोई रिसर्च नहीं है, वो सीधे सीधी बात है। लेकिन बात जब लक्षणा और व्यंजना की दृष्टि से जुड़ती है तब उसमें रिसर्च की मेथोडोलॉजी विकसित होती है, तब उसमें रिसर्च करने की आवश्यकता बलवती होती जाती है। और ये दृष्टि हमको समकालीन बोध में मिलती। समकालीन बोध की एक सीमा जिसकी ओर लगातार सर इशारा प्रवीण सर कर रहे थे कि जो कॉर्पोरेट जगत है, उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था, तो आधुनिकता में जो भारतीय समाज, जिस आधुनिक समय में भारतीय समाज आगे बढ़ता है, तो वो जो कॉर्पोरेट सक्सेस की ओर जो बढ़ रहा है या डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है, उस दृष्टि से भारतीय जो चिंतन है, भारतीय चिंतन जब मैं कह रहा हूं तो वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। और इस अर्थव्यवस्था से जुड़ने के कारण दोनों में एक क्लैश है, और ये क्लैश लगातार बढ़ता जा रहा है।
वर्तमान की सामाजिक समस्याएं और पारिवारिक समस्याएं या जीवन की जितनी भी समस्याएं आप देख सकते हैं, किसान आंदोलन भी अभी हुआ है। और ये कारपोरेट बनाम एग्रीकल्चर के बीच का एक संघर्ष है जिसको हमें देखना होगा कि, और पूरे भारतीय समाज में आप इससे मुक्त नहीं कर सकते। तो ये जो इसकी सीमाएं और संभावनाएं हैं, हमें जो जितनी भी मेथोलॉजी हमारे समय में आ रही हो, चाहे गुणात्मक हो चाहे संख्यात्मक हो, दोनों दृष्टियों से मैं उसे देख रहा हूं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, दोनों दृष्टियों से देखने के बाद आप तब क्वांटिटेटिव कहते हैं जब आप भारतीय मूल्यों यानी कृषि अर्थव्यवस्था की ओर जाते हैं, तब आपके मूल्य आपको दिखाई देते हैं। लेकिन जब आप ये उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते हैं, तब आप उन्हीं मूल्यों की टूटन को देखते हैं, लगातार देखते हैं। और आप देखिए कि जैसे जैसे भारतीय समाज में आधुनिकता में भारतीय समाज बढ़ता रहा, वैसे वैसे जो हमारे कृषि आधारित मूल्य थे वह लगातार टूटते चले गए। वो चाहे सामाजिक मूल्य हो, चाहे वो पारिवारिक मूल्य हो, चाहे वो जीवन के मूल्य हो, चाहे वो नियमों कानूनों के मूल्य हो, और तमाम तरह के संवैधानिक नियम बनते चले गए। लेकिन मूल्य चूंकि टूट रहे हैं और मूल्य ही टूट रहे हैं, तो अब संविधान के नियमों को मानने से या संविधान की भी अवमानना चलने लगी। लिखा है, पढ़ा है, सब कुछ है। तो समकालीन चिंतन की जो दृष्टियां हैं वो इन्हीं बिंदुओं पर काम कर रही, वो चाहे आपके परंपरागत जितनी भी हमारे वैचारिक दृष्टिकोण हो, सत्यम शिवम की अवधारणा हो, शास्त्र एवं सौंदर्य की अवधारणा हो, या लोग और शास्त्र के अन्वय समन्वय की अवधारणा हो। लोक और शास्त्र का भी अन्वय समन्वय बहुत ज्यादा हमारे भारतीय चिंतन में या शोध प्रविधि में दिखलाई देता है। उसमें कहा भी गया है कि यद्यप शुद्धम पर लोक विरुद्धम ना करणीयम ना करणीयम, यानी कि जो शास्त्र के विरुद्ध में लोक के पक्ष में बातें लगातार होती रही। लोक को कई बार शास्त्र से बड़ा माना गया है। कारण यह है कि शास्त्र कई बार जड़ हो जाता है, लेकिन लोक जो है वो गतिशील बना रहता है, और जड़ता हमेशा गतिशीलता को रोकने का काम करती है, और जब रोकने का काम करती है लोक उस जड़ता को तोड़ देता है। इसलिए शास्त्र की तमाम अवधारणाएं ये लोक तोड़ता हुआ भी चलता है। लेकिन ये जो लोक है उसको अनुशासित करने का काम, क्योंकि देखिए यहाँ शब्द जो मैं प्रयोग कर रहा हूं, शासित करना नहीं कह रहा हूं, अनुशासित कर रहा हूं। और अनुशासित की जो अवधारणा है वह व्यक्ति के अंदर से आती है। जैसे हमें गलत काम नहीं करना, ये अगर हमारे अनुशासन में हमारे आ जाए तो हम कहीं भी गलत काम नहीं करेंगे, भले ही कोई अकेले ना हो। लेकिन जब ये शासन के अंतर्गत आएगी तो कोई देखे ना, इसलिए हम नहीं करेंगे, लेकिन कोई नहीं देख रहा हो तो हम करेंगे। तो ये जो मैं बात शासन और अनुशासन की कर रहा हूं, तो ये शास्त्र लोक को अनुशासित करने का काम करता है। और इसीलिए आप लगातार भारतीय परंपरा में या भारतीय संस्कृति में या भारतीय परंपरा के संस्कारों में चले जाइए, ये शासन के रूप में हमें अनुशासन के रूप में दिखाई देगा, शासन के रूप में नहीं दिखलाई देगा। और स्वाधीनता के बाद जो मूल्य या नियम निर्धारित किए गए वो शासन के माध्यम से निर्धारित किए और शासित करने के लिए निर्धारित किए, इसलिए लगातार उसमें टूटन भी दिखलाई देता है। टूटन का दूसरा कारण मैं वही सर का जो प्रवीण सर ने कहा कि कॉर्पोरेट डेवलपमेंट, ये जो हम लगातार एक कॉर्पोरेट जगत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं या उसी को अपनी उन्नति मान रहे हैं, देश विकास कर रहा है, डेवलपमेंट जिसे शब्द बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया है। बहुत बड़े बड़े ह्यूमैनिटीज के जो आलोचक हुए हैं उन्होंने ये बात कही है, ये जो विकास है ये कई बार हमारे समाज का विनाश लेकर के आता है, और ये ऐसा जान पड़ता है। मतलब विकास को विनाश की श्रेणी में रखा जाता है, और पीडब्ल्यूडी जैसे जगहों को भी कुछ लोगों ने इंगित किया। मैं वहां उसको सांकेतिक रूप से कह देना चाहता हूं, बहुत विस्तार से नहीं कहूंगा। तो आप देखिए कि किस तरह से ये एक गवर्न करने
अंदर से गवर्न होना और बाहर से गवर्न करना, ये दोनों में फर्क होता है। किसी को कह दो कमरे के बाहर मत निकलो और वो व्यक्ति कमरे में बंद हो तो उसे घुटन महसूस होगी क्योंकि उसे शासित करके रखा गया। लेकिन किसी के अंदर ये आ जाए कि कमरा हमारे लिए सेफ है और कमरे से बाहर निकलना कहीं गलत हो जाएगा या हमारे साथ कुछ गलत हो सकता है, तो उसके लिए वो कमरा घुटन का कारण नहीं बनेगा। ये शासन और अनुशासन की प्रणाली है। स्वाधीन भारत में इसी प्रणाली का एक विस्तार हमें लगातार दिखाई देता है। एक तरफ इस कॉर्पोरेट जगत की ओर बढ़ती हुई हमारा समाज है, दूसरी तरफ इन नियमावली में दबा हुआ समाज है, और तीसरा ये कि इन्हीं नियमों और ऐसी बढ़ती हुई प्रवृत्ति में के मूल्यों में जो टूटन आ रही है, संवैधानिक टूटन हो। नियम बहुत अच्छे हैं, हमारे संविधान भारत विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, महत्वपूर्ण संविधान, लेकिन उन संविधान में जितने भी नियम है आप सोशल में देखिए, इसका प्रभाव यही कॉर्पोरेट जगत है। आज भी किसी अनपढ़ या गंवार व्यक्ति के पास चले जाओ, जिसे आदिवासी या तमाम शब्द कहे गए, उनके पास चले जाइए, नियमों उनको एक नियम बता दिए, वो एक भी नियम नहीं तोड़ता है। लेकिन थोड़ा पढ़ा लिखा और शहरीकरण से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको आप एक नियम बताइए, वो तुरंत उसको तोड़कर दूसरा नियम तैयार कर देगा। कानून एक बना दिए, दूसरा कानून बनाए बैठा है। यहाँ प्रशासनिक कार्यालयों से लिपकी वर्ग से लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था तक में ये हमें दिखलाई देता है। ये समकालीन चिंतन की सबसे बड़ी चुनौतियां भी हैं, जिसकी ओर हम इशारा कर रहे हैं। इस आधुनिक समाज में तीन चीजें बहुत काम करती हैं। एक है तथ्य, दूसरा है कथ्य और तीसरा है मिथक। और पूरी अभी आप देखिए कि मार्क्सवाद जब इस देश में 1936 में पहली बार प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लखनऊ में होती है, भारत में प्रेमचंद इसमें व्याख्यान देते हैं, वहां से लेकर के मार्क्सवादी बहुत बड़ी विचारधारा थी, प्रगतिशील विचारधारा भी आई, और इसके बाद जो विश्व युद्ध हुआ या भारत और चाइना से तमाम युद्ध हुए, पाकिस्तान से युद्ध, उसमें एक अलग तरह का संतरास भाव भी हमें दिखलाई देता है, अजनबीपन दिखलाई देता है। और आधुनिकता के जो जितने मतलब एक आधुनिकता दूसरे उत्तर आधुनिकता की जो चर्चा लोग करते हैं, उनके जो मूल्य है या सूत्र है, वो सब हमें इसी दौर में दिखलाई देने लगते हैं। लेकिन ये सारे मूल्य जैसे टूट रहे हो, कोई भी नियम और शासन की व्यवस्था काम नहीं आ रही है। इसलिए आप देखेंगे कि 1960 के बाद एक मिथकीय चेतना या जितनी भी रचनाएं लिखी गई या सामाजिक उपदेश की जो महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई, उसमें मिथकीय चेतना जुड़ती। और मिथ जो है, मिथकीय चेतना जो है, ये हमारे वेदों और पुराणों से आती। मैं इसमें थोड़ा सा एक विस्तार ये दे देना चाहता हूं कि जो ये मिथ की कल्पना है, जो ये तथ्य की कल्पना है, जो ये तथ्य की कल्पना है, हमारे यहाँ इतिहास का वो मापदंड नहीं रहा है, तथ्य का मापदंड रहा है। और तथ्य कितना महत्वपूर्ण है, इसका मूल्य रहा है, और ये मूल्य सत्य और शिवम सुंदरम की ओर ही ले जाते हैं। लेकिन आज समस्त इतिहास की घटनाओं को जान कर लेकर या उनको सब कुछ जान लेने की जो जिज्ञासा है, उसके बाद भी वो मूल्यों की प्रतिष्ठा नहीं हो रही। हमें जानकारी है लेकिन मूल्यों की समझ गायब होती जा रही है। और इसी तरह से आप देखेंगे कि जो क्योंकि 1960 के बाद से लेकर लगातार समाज कई रूपों में बदलता है, कई तरह का चिंतन आता है, एक राजनीतिक विसंगति लगातार हमको दिखलाई दे रही है और लगातार वो बढ़ती जा रही है। वो और खास तौर से 1977 में जब सबसे पहले इमरजेंसी का जो हुआ था 72 या 77 में से लेकर के अब तक लगातार राजनीति के प्रति एक विसंगति भाव का चित्रण हमें दिखलाई देता है। दूसरा, जब हम सामाजिक परिवेश में लेखन की दृष्टि से देखते हैं तो स्त्रीवादी लेखन, फिर आदिवासी लेखन, दलितवादी लेखन, या इधर सबाल्टर्न को लेकर के तमाम लेखन आ रहा है, और थर्ड जेंडर को लेकर के लेखन आ रहा है। इन लेखकी अवधारणाएं बिल्कुल बनाकर लिखी गई है। एक अवधारणा विशेष काम कर रही है, बल्कि अवधारणा से ज्यादा मैं उसे अगर धारणा कहूं तो ज्यादा काम कर रही है। कोई भी लेखक हो या सामाजिक चिंतन हो या रिसर्च स्कॉलर हो,
एक धारणा विशेष बना करके अपना काम शुरू करता है और जो तथ्यों का विश्लेषण करता है, प्रकल्प जितने उसके तथ्य होते हैं, जितना वो रिसर्च से जोड़ता है, उसी धारणा विशेष के आधार पर वो मूल्यांकित करने लगता है और कहने लगता है। उसको उसकी जो नैतिक जिम्मेदारी है, जिसमें तटस्थ और मौलिक दृष्टि से उसकी विवेचना करनी है, वो विवेचना गायब है। वो एक मतलब कहा धारणा विशेष बना करके काम कर रहा है। तो शोध प्रबंध का जो ताना बाना है वो ऐसा बुना जा रहा है। और देखिए कि आज के समय में शायद ही कोई ऐसा एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर हो जिसने दलित, स्त्री, आदिवासी या इधर थर्ड जेंडर पर न लिख रहा हो। सबका कोई ना कोई एक ना एक लेख प्रकाशित हो गया है। तो एक ये जो धारणा विकसित हो गई है और उस धारणा को बनाकर, अब धारणा कैसे काम कर रही है? स्त्री अच्छी है इसलिए स्त्री के पक्ष में लिखो, स्त्री का लगातार शोषण किया गया है, इसको कारण बना के लिख दिया गया। या मैं एक ही चीज को स्त्री को ही घोषित कर रहा हूं या दलित को कलित, आप किसी को भी रख लीजिए कि उसका शोषण हुआ, ये धारणा बना करके काम किया गया। एक चीज जो मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूं कि हम लोगों ने लगभग स्वाधीनता के बाद, या बल्कि आप ये कह लीजिए कि आधुनिकता के बाद एक बहुत बड़ी गड़बड़ी की है, या हमारे चिंतन में या हमारे शोध में या हमारे अध्ययन में या हमारे लेखन में वो बिल्कुल गायब सा हो गया है। वो यह है कि हम परिणाम की समीक्षा कर रहे हैं और लेकिन परिणाम, उस परिणाम आने का कारण क्या है इसकी ओर हमारी किसी की निगाह नहीं जाती। स्त्री का शोषण हुआ है तो क्यों हुआ है, दलितों का शोषण हुआ है तो क्यों हुआ है, या हो रहा है तो क्यों हो रहा है। इतनी तमाम बौद्धिक जागरण के बाद जब मैं कह रहा हूं कि कोई भी ऐसा एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर ना मिलेगा, भले ही असिस्टेंट में मिल जाए क्योंकि वो शुरुआती दौर में है, जिसने स्त्री विमर्श, दलित विमर्श या आदिवासी विमर्श पर ना लिखा हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा। इतने तमाम बौद्धिक चिंतन के बाद क्या कारण है कि आज भी उनका शोषण लगातार बढ़ता जा रहा है। हमें इस चीज की तलाश करनी है। हमारे अध्ययन या शोध में ऐसी कौन सी कमियां हैं, तमाम लेखन में या हमारे सामाजिक जीवन के संचालन में कैसी भूमिका है कि ये शोषण बढ़ता है और ये क्यों नहीं रुक रहा है। दूसरा कि ये जो समकालीन बोध का चिंतन है, ये समकालीन दृष्टि है, इसमें किसी भी व्यक्ति को, वो चाहे लेखक हो, वो चाहे शोधकर्ता हो या उस सामाजिक जीवन का कोई भी हिस्सा हो, किसी को सुख और संतोष नहीं है। लगातार एक दौड़ है और इस दौड़ को अगर समझना है तो मैं, क्योंकि जिससे और सर इशारा दिला रहे थे प्रवीण सर कि अगर हमें अलग अलग विषयों से चिंतन करना है तो चिंतन के लिए ठीक है, वहां जाकर देखिए, लेकिन एक उन चिंतन में जितने ह्यूमैनिटीज के विषय, सारे विषयों को जोड़कर इंटीग्रेटेड थिंकिंग की ओर हमें बढ़ना होगा, इंटरेक्शन की ओर हमें बढ़ना होगा। जब आप पूरे एक चिंतन के इंटरेक्शन की ओर जाएंगे, सामाजिक जुड़ाव की ओर देखेंगे, या जितने सोशल के विषय हैं या ह्यूमैनिटीज के विषय उनको जोड़कर देखेंगे, तो जो दृष्टियां आएंगी वो हमारे समाज के लिए ज्यादा मुकम्मल होंगी। व्यक्तिगत आप किसी एक धारणा या विशेष एक फैक्ट को लेकर बात करेंगे तो कमजोरियां आएंगी। मैं कह रहा हूं, मैं फिर वहीं पहुंच रहा हूं कि इतनी तमाम जागरूकता या चेतना के बाद ऐसे क्या कारण हैं, और जिस पर लगातार रिसर्च भी हो रहे हैं, फिर भी कोई चीज रुक नहीं पा रही। किसी को सुख और संतोष नहीं है, क्योंकि हम परिणाम की समीक्षा कर रहे हैं, कारण की समीक्षा नहीं कर रहे। जिस दिन हम कारणों की तलाश करेंगे और कारणों को दूर करने की बात करेंगे, उस दिन समाज हमारा सुधरेगा, समाज में जो विसंगति है वो दूर होगी। और रिसर्च मेथोलॉजी जो हमारी है वो धारणा, जैसे मैं कह रहा हूं कि ताना बाना, यानी जैसा हमारा समाज है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण संगोष्ठी हुई थी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, जिस पर संयोग से मैं भी वहां उपस्थित था एक पार्टिसिपेंट की दृष्टि से। तो वहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है
कि हर एक व्यक्ति को रिसर्च करने के लिए मजबूर ना किया जाए। एक हो सकता है कि एक प्राध्यापक बहुत जानकार हो, उसके प्राध्यापक की गुणात्मकता बहुत अधिक हो, लेकिन रिसर्च की जो गुणात्मकता है उसमें ना हो। अगर उसमें रिसर्च की गुणात्मकता नहीं तो उससे शोध कराने की जरूरत नहीं है। आज कई जगह ये होता है कि आप प्रमोशन के लिए आपके 2 शोध पत्र प्रकाशित होने चाहिए, आपके 4 शोध पत्र प्रकाशित होने चाहिए, आपके 5 पुस्तकें होनी चाहिए। ये जो एक मतलब एक नियमावली बना दिए हैं या एक प्रमोशन का या आगे बढ़ने का माध्यम बना दिए, उससे ये क्वांटिटी लगातार कमजोर हो रही। हमें इस कमजोरी की ओर भी ध्यान देना होगा। और उसमें एक बहुत ये बात भी रखी गई थी कि जिस तरह से हम यूजी, पीजी या हाई स्कूल से लेकर सारी डिग्रियां देते हैं, वैसे ही रिसर्च की भी, मतलब डॉक्टरेट, क्योंकि व्यक्ति रिसर्च के लिए कई बार काम नहीं करता है, वो डॉक्टरेट बनने के लिए, डॉक्टर की उपाधि पाने के लिए काम करता है। इसलिए पीएचडी की भी एक ऐसी पढ़ाई कर दी जाए जिसमें उन्हें डॉक्टर की उपाधि प्रदान की जाए, क्योंकि रिसर्च करना, शोध करना इतना मतलब इतनी सहज दृष्टि से मतलब एक इतनी सहज नहीं होना चाहिए, उसमें गहरा चिंतन होना चाहिए। और आप देखिए, मैं बहुत सी थीसिस से देखा ह्यूमैनिटीज की, मानविकी की, और अंतिम चिंतन जो कि जिसकी ओर मैं जाक दरिदा का इशारा मैं कर रहा था कि सबसे बड़े फिलासफर रहे और उनके बाद कोई एक मुकम्मल अवधारणा को लेकर कोई नया फिलासफर नहीं आया है। और जाक दरिदा ने जो बातें कही, वो राइटिंग एंड डिफरेंस की हो या ऑफ द ग्रामेटोलॉजी नामक उनकी अपनी पुस्तक में हो, वो सारी की सारी विखंडन की जो अवधारणा हो, उन सारी अवधारणा के बाद एक नया रास्ता वो तैयार करते हैं। और उस तैयार किए हुए रास्ते में अगर हम नहीं बढ़ सकते और अपने अतीत के ज्ञानात्मक प्रक्रिया, अब मैं अतीत कह दिया हूं तो ये वैदिक जागरण से लेकर के अब तक का समस्त जागरण निहित है, क्योंकि हमारा जो भारतीय जागरण है ये अमेरिका के जैसा जागरण नहीं है, यह इंग्लैंड के जैसा जागरण नहीं है, ये अन्य देशों के, चीन की तरह का जागरण नहीं है। यह ऐसा जागरण वाला देश है जो हर बार जगता रहता है और हर बार सोता रहता है। आप देखिए कि इसमें वैदिक जागरण है, वैदिक जागरण बहुत बड़ा ज्ञानात्मक संपदा थी, इसमें आरण्यक जागरण भी है, इसमें उपनिषदीय जागरण है, इसमें जागरण है, इसमें रामायण का जागरण है, इसमें महाभारत काल का जागरण है, इसमें बौद्ध धर्म का जागरण है, इसमें मतलब आप राजनीतिक देखिए तो समुद्रगुप्त के यहाँ राजनीतिक जागरण देखिए आके कैसे जागरण का भाव बढ़ रहे हैं। और जिस आप देखिए कि जिस धारणा को लेकर के हम लोग आज तक अध्ययन करते आए हैं कि अकबर के 9 रत्न थे और 9 रत्नों को पहले बहुत महान बताया जाता है, आप इस धारणा को तोड़ने के लिए आप उज्जैन चले जाइए और उसी महाकालेश्वर मंदिर के पीछे विक्रमादित्य का एक सिंहासन बना हुआ है जहां पर उनके 9 रत्न बैठे हैं। ये 9 रत्न की प्रणाली कहां से है, जिसमें आर्यभट्ट जैसे विद्वान है, बराहमिहिर जैसे, सुश्रुत जैसे विद्वान बैठे हुए, ऐसे 9 रत्न इस देश में हुए, वो जागरण देखिए। और इसके बाद भक्ति काल का जो जागरण है, पूरे भारतीय जागरण है, एक कलात्मक चेतना है, एक सांस्कृतिक चेतना है, जिस तरह से लगातार एक प्रकार से भारतीय संस्कृति के अवसान के लगातार कारक सिद्ध होता हुआ समय और समाज बढ़ रहा था, उसको इस भक्तिकालीन समाज ने, ये भक्तिकालीन कवियों ने या रचनाकारों ने ये सामाजिक चिंतन। और देखिए एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, हम कबीर को समाज चिंतक भी मानते हैं और कवि भी मानते हैं, हम तुलसी को समाज चिंतक मानते हैं और कवि भी मानते हैं, यानी समाज चिंतक और रचनाकार में कोई फर्क नहीं था। और आगे जैसा बढ़ता चला गया, इन्हीं लोग सामाजिक चिंतक, यही राजनीतिक चिंतक, यही अब देखिए राजनीतिक चिंतन आप कबीर में भी देख लीजिए, तुलसी में देख लीजिए, और एक प्रकार से सूरदास में जो कि अंधा है उसके यहाँ भी देख लीजिए,
उसमें भी एक ऐसी चेतना है जिसमें साफ साफ कह देता है कि हम जैसे व्यक्ति के लिए इस राजनीतिक जगह यहाँ संतन को कहाँ सीकरी सो काम, ऐसी बातें तक वहां पर आती है। और ये बात लगभग तुलसी भी कहते हैं, कबीर भी कहते हैं, जितने भी कुंभन दास भी कहते हैं, कोई भी ऐसा भक्तिकाल कर, यहाँ तक कि मीराबाई जैसी स्त्री भी कहती है, उस समय कहती है जब लगातार 1500 वर्ष लगभग गुलामी की दृष्टि से भारत गुजर चुका था। 1500 वर्षों की गुलामी के बाद जिस तरह से मीराबाई सत्ता और शक्ति का विरोध करती है, उसके बरस खड़ी होती है और लोक चेतना में सहज आवाज लगाती है, वह स्मरणीय है। इन तथ्यों के आधार पर या इन तथ्यों के आधार पर हमें चेतना की एक ऊर्जा मिलती है जो कि समकालीन चिंतन की एक दृष्टि देती है। तो दृष्टि हमें विराट करनी, बड़ी बनानी, व्यापक बनानी है और अंततोगत्वा हम, क्योंकि जो भी रिसर्च मेथोलॉजी है जिसकी समीक्षा लगातार होती रही है, ये किस रिसर्च मेथोलॉजी के तहत हम काम कर रहे हैं, ये रिसर्च मेथोलॉजी हमें कहां से मिली है और किन अभिलक्ष्यों को पूरा करने के लिए मिली है, इसकी भी ओर हमें ध्यान देना। तो ये समस्त रिसर्च मेथोलॉजी हमें पश्चिम से आई हुई है। उस पश्चिम से आयातित रिसर्च मेथोलॉजी को केंद्र में रखकर इस भारतीय चिंतन की जो एक ह्यूमैनिटीज, एक मूल्यों को लेकर जो अवधारणा रही है, या जो एक प्रकार, अच्छा, ये मूल्यों की अवधारणा ही शोध प्रवृत्ति है। आप देखिए कि इस शोध प्रवृत्ति के चिंतन को आयामों को कैसे दूसरों तक पहुंचाया जाता है। अब वैदिक जागरण जो हुआ, उसके ज्ञान को जब कोई सीधा सीधा समझ नहीं पा रहा तो ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, वहां भी समझ में नहीं आया तो जी उपनिषदी चेतना आई, उपनिषदों में वो बात कही गई, वहां भी समझ में नहीं आई तो विस्तार से कथा सुना गई, पौराणिक चेतनाएं जितनी है वो उसमें आई। जब वहां भी समझ में नहीं आई या उसके आए तो रामायण काल की चेतना आई, महाभारत की चेतना आई। इसके बाद बौद्ध जागरण है। लगातार ये जागरण के बीज सूत्र हैं, इनको ध्यान में रखकर हमें एक मूलगत अवधारणा या रिसर्च मेथोलॉजी को भी देखना होगा, क्योंकि जैसा हम देखेंगे और वैसा लिखेंगे और अपनी एक मूलगत अवधारणा नहीं रखेंगे तो हमारा समाज भले ही कॉर्पोरेट दृष्टि से उन्नति की बात करता हो या कर रहा हो, लेकिन हम मनुष्यता में उतने ही पीछे चले जाएंगे, अपने मानवीय मूल्यों में भी उतने लगातार पीछे चले जाएंगे और ये अवधारणा हमको हमारे जमीन से ही एक दिन हटा देगी। तो इसलिए इस दृष्टि से भी हमें इस जो रिसर्च का ताना बाना है, शोध केवल डॉक्टरेट लगाने के लिए मतलब हमें करना है या शोध पत्र हमें इसलिए लिखना है कि हमें हमारा प्रमोशन हो जाए, तो यहाँ लिखना और बनाना दोनों में फर्क होता है। हम आज की दृष्टि में, अब मैं बहुत से ह्यूमैनिटीज के रिसर्च पढ़ा जिसने किसी विचार का सृजन किया हो, जैसे मार्क्सवाद ने, कार्ल मार्क्स ने बहुत अध्ययन किया और एक बहुत चिंतन लगातार 18 घंटे वो पढ़ते रहे, तब जाके दास कैपिटल नामक बुक लिखी। तो वो तो उनका एक महत्वपूर्ण रिसर्च था, लेकिन उसके बाद जो भी कार्ल मार्क्स के माध्यम के को आधार बनाकर दुनिया में लिखा गया, वो कोई चिंतन नहीं था, वो कोई शोध नहीं था। वो आप उस चीज को एक प्रकार से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, इसलिए रिसर्च और क्रिटिसिज्म में फर्क है। हमें क्रिटिसिज्म को शोध नहीं कहना है। और जो समकालीन पद्धति है या समकालीन समय में जो हो रहा है, वो लगातार क्रिटिसिज्म को ही ह्यूमैनिटीज का रिसर्च मान लिया जाता है। तो ये इस धारणा को भी हमें तोड़ना पड़ेगा, इस ताने बाने को तोड़ना होगा। और हम जैसे कि किसी प्रमोशन के लिए शोध पत्र लिखने की जरूरत नहीं है, हमें उस शोध में कुछ मौलिक चिंतन लाना है, इस दृष्टि से हमें शोध लिखना होगा, तब हम एक अपने आने वाले समाज को मूल्यवान बना सकते हैं या वो रिसर्च की जिम्मेदारी को हम निभा सकते हैं। तो एक तो हमें इस दृष्टि से काम करना होगा। दूसरे, हमें जिस समाज के, क्योंकि एक अभी जिस जिम्मेदारी को प्रवीण सर ने कहा कि हम एक प्राध्यापक हैं, हमें अपने समय से टकराना होगा। देखिए कि जितने भी बड़े समाज सुधारक या चिंतक हुए हैं, वो अपने समय से टकराते हैं, चाहे वो पश्चिम के हो चाहे वो भारत के हो, चाहे आप नाम में बहुत से हैं कि। और दूसरा एक चीज ये भी था कि जितने भारतीय हिंदू काल जो आधुनिक युग का पहला चरण हिंदी साहित्य में लगभग
19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध मान लीजिए। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब आप देखते हैं तो जो सामाजिक चिंतक है वह पत्रकार है, जो पत्रकार है वही साहित्यकार भी है, वही एक सोशल कार्यों में संलग्न भी रह रहा है। तो हमें इन फैक्टर्स की या इस तरह के इंटीग्रेशन की भी आवश्यकता है। ये बहुत अलग अलग विषयों में बांध, क्योंकि अब किसी व्यक्ति को जब स्त्री अध्ययन के केंद्र का अध्यक्ष बनाया जाएगा तो उसकी अवधारणा सिर्फ स्त्रियों पर ही केंद्रित रह जाएगी। किसी को हिंदी विभाग का बना दिया गया तो उसकी अवधारणा सिर्फ हिंदी विभाग में को केंद्रित हो रह जाएगी, और उसकी जो सामाजिक जिम्मेदारी है कि समाज तक पहुंचाना, राज्य तक पहुंचना, राजनीति तक जाना, वो सब अवधारणाओं को तोड़ देती है। इसलिए हमें इंटीग्रेटेड होने की जरूरत है। इस चीज को लेकर लगातार 2011 से भारत अध्ययन केंद्र जो बीएचयू में खुला है वो इस पर लगातार काम कर रहा है। आज 10 साल उसको हो चुके हैं ऐसा काम करते हुए। तो इस तरह के अब अध्ययन की आवश्यकता है जो इंटीग्रेटेड हो, जो आपको डिवाइड नहीं करे बल्कि जोड़े। ये जितना भी आधुनिक चिंतन है वो लगातार डिवाइड करता चला आया है। जैसे कि हम 1936 के बाद ये मार्क्सवाद को देखें, मार्क्सवाद बहुत अच्छा है, वैचारिक धारणा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन एक प्रकार का सामाजिक ताना बाना वो तोड़ता है, जिसमें जो कमियां हैं वो दूर करने की जरूरत है। जो सत्ता है, जो मतलब उस व्यवस्था का नियामक है उसको समझाने की जरूरत है। लेकिन वो क्या किए, एक तोड़ पैदा हुई। अब वो तोड़ इतनी बढ़ गई कि 1960 के आसपास का आप समय और समाज देखें तो परिवार टूटने लगता है। और आज फिर परिवार के बाद स्त्री पुरुष के परिवार का संबंध लगभग संयुक्त परिवार से एकदम विखंडित होने लगते हैं 1960 के बाद। और 1970 के बाद देखिए स्त्री पुरुष के संबंधों में बिखराव आ गए। और इसके बाद बच्चे सब कुछ 1980 में चले जाइए तो जैसे बच्चा अलग, बेटी अलग, पत्नी अलग, पति अलग, ऐसे संबंधों के बिखराव है। और आज व्यक्ति के अंदर खुद का बिखराव शामिल हो गया है। ये इन लगातार जिस कॉर्पोरेट जगत में या कॉर्पोरेट डेवलपमेंट में या कॉर्पोरेट डेवलपमेंट में जो हम बढ़ रहे हैं, इसकी ये अवधारणा है कि आज हर व्यक्ति रोज टूटता है। कहीं ना कहीं उसके अंदर का जो एक मनुष्य है वह कहीं ना कहीं घुटन महसूस कर रहा है, चाहे वो अध्ययन के क्षेत्र में हो, चाहे वो चिंतन के क्षेत्र में हो, चाहे वो कहीं भी बैठा हो, सोशल, या तो वो गलत कर रहा है या घुटन महसूस कर रहा है। ये भारतीय समाज आज समकालीन समय का है। और इस भारतीय समाज जिस समकालीन समय में जो है उसमें इस घुटन को दूर करने के लिए हमें अपने समय से टकराना होगा। जैसे कभी गौतम बुद्ध टकराए थे, या भक्ति काल के जितने रचनाकार है वो टकराए थे, या आधुनिक जागरण के जितने अग्रदूत हैं वो टकराए थे अपने समय से। आज इस बौद्धिक वर्ग को भी कहीं ना कहीं अपने समय और परिवेश से टकराने होंगे, तब हम मूल्यों की सर्जना कर लेंगे। और ये मूल्य ही हमारे महत्वपूर्ण है। हम चले जाएंगे, सब चले जाएंगे, लेकिन ये मूल्य की अर्थवत्ता बची रहेगी। आने वाले भविष्य के लिए भी वह उतने ही मूल्यवान होंगे जो हमारे अतीत में रहे हैं। तो इसलिए हमें समस्त समकालीन चिंतन की तमाम अवधारणाएं और दृष्टियों के बाद किस ऐसे रिसर्च मेथोलॉजी की ओर भी हमें ध्यान देना होगा जो हमारे बने बनाए ढांचे या ताना बाना को तोड़ दे। जैसे कोई रिसर्च कैसे होते हैं, शोध कैसे होते हैं, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सभी लोग बौद्धिक हैं और जुड़े हैं, चाहे वो रिसर्च स्कॉलर के रूप में हो, चाहे वो प्राध्यापक रूप से। एक पूरी की पूरी अवधारणा उसने कितना महत्वपूर्ण लिखा इससे मतलब नहीं है, वो लिखे जैसा होना चाहिए, शोध जैसा होना चाहिए, 10 रेफरेंस होने चाहिए, ऐसा लिखा होना चाहिए, 2-4 बातें दूसरे की कही गई होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो रिसर्च कर रहा है, जो शोध कर रहा है, उसको अपने शोध का खुद भी बोध नहीं है। और जब खुद उसके अंदर वो बोध नहीं है, केवल एक ताना बाना बुन करके रख देना, उससे हमें उससे हमें मुक्त होना चाहिए। और यह केवल मैं ह्यूमैनिटीज के नहीं, जिस वक्त प्रवीण सर ध्यान दिला रहे थे कि यह सोशल फैक्टर्स में जितने हैं, आज हमारे यहाँ समस्याएं क्यों आ रही हैं, सबसे बड़ी चिंता है कि समस्याएं क्यों आ रही, इतने निराकरण के बाद भी, इतने नियमों के बाद भी लगातार समस्याएं क्यों बढ़ती जा रही है।
क्योंकि हम उन जिम्मेदारी या उन मूल्यों को या उन 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 नियमों का पालन ही नहीं कर रहे हैं। एक बढ़ती हुई दुनिया में एक भगती हुई दुनिया में दौड़े जा रहे हैं। और जो बहुत महत्वपूर्ण बात सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखी है कि लोकतंत्र को लोकतंत्र को लाठी में जूते की तरह लटकाए भगे जा रहे हैं सब सीना फुलाए। तो ये जो सीना फुलाए भगने की प्रवृत्ति है लोकतंत्र को जूते की तरह लटकाकर, इससे हमें बचना होगा। हम लोग के हैं। और एक चीज और सबसे बड़ी दिक्कत ये जो समकालीन समय में है वो राजनीतिक दिक्कत भी है, जिस ओर प्रवीण सर ध्यान दिला रहे थे। तो इसका मुख्य कारण ये है कि अगर हम स्वाधीन पूर्व के भारत का दिग्दर्शन करें तो स्वाधीन पूर्व के जितने भी लोग हमें मिलेंगे या चिंतक मिलेंगे या राजनीतिक मिलेंगे वो सब पढ़े लिखे मिलेंगे। इसलिए उनकी बात भी जनता मानती है, और उनके नियमों का पालन भी करती है। लेकिन जैसे जैसे हम आजादी से आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक पढ़ाई लिखाई का जो कल्चर है, जो एक एकेडमिशियन का जो स्वभाव है, उससे राजनीति पूरी तरह से विलग होती जा रही है। और इस चीज में कई बार मैं कह भी चुका हूं कि जो पढ़े लिखे उनको भी अब राजनीति में जाना चाहिए। नहीं, हमारा समय और समाज कहां लेकर हमें छोड़ देगा, ये इसके विषय में कुछ हम कह नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं, इससे हमारे आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। इसलिए हमें शोध हो या शोध की प्रवृत्ति हो, उसमें मूल्यों की तलाश करनी है, उसमें जीवन बना रहे, जिजीविका बनी रहे, जीवन बना रहे और जिजीविका बनी रहे। दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, जिजीविका जीने की इच्छा, दूसरी जीवन बना रहे, जिसकी ओर उसमें बहुत चीजें कि वाटर का है, जो भी समस्या, प्रदूषण की समस्याएं हैं, जितने भी हमारे समस्याएं हैं, जीवन बना रहे और जीविका बनी रहे, इसके लिए भी हमें तमाम शोध करने की जरूरत है। और इस जो बना बनाया ढांचा है, ये जो ताना बाना है, उससे थोड़ा सा मुक्त होने की जरूरत है। दूसरा एक मैं और चीज कहूंगा कि मैं कितना जानता हूं मैं नहीं जानता, बहुत थोड़ा बहुत, क्योंकि ज्ञान समुद्र है, उसकी दो चार बूंदे ही जो मैं जानता हूं उसी के छींटे मैं कुछ आप लोगों को दे रहा हूं कि ज्ञान भारत का बहुत विशाल है और उससे हमें कुछ सीखना है। हमें पश्चिम की सिर्फ अवधारणा को लेकर या धारणा को लेकर भारतीय परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकित नहीं करना है। जैसे मैं लगातार कहता रहा हूं कि जो मार्क्सवाद की समीक्षा विदेशों के पाश्चात्य की है वो भारत में नहीं आ सकी है। भारत का मार्क्सवाद वैसा नहीं था, भारत का साम्यवाद वैसा नहीं था जैसा पश्चिम का था, क्योंकि वो कॉर्पोरेट जगत का था। और भारत का जो सामंतवाद था, कृषक था, वह भले ही कुछ लेता रहा हो, लेकिन उस लेने में वो कभी कभी पूरी दानशीलता भी दिखलाई देती थी। और मैं ज्यादा नहीं कह रहा कि जब 1990 तक 95 तक मैं ऐसे गांवों से जुड़ा रहा जिसमें लोग कहते थे कि गांव में कोई भूखा ना सोए। ये भारतीय सामंतवाद की दृष्टि थी कि कोई भूखा ना सोए, उसके लिए खड़ा है। लेकिन आज इस 20-25 सालों बाद गांव में कोई भी ये नारा लगाने वाला नहीं है, कोई भी ये कहने वाला नहीं है कि कोई भूखा मत सोए। ये एक प्रकार के कॉर्पोरेट पूंजीवाद की जो व्यवस्था है जिसकी ओर है वो बढ़ती जा रही है। हमारे गांव में भी ये मूल्य टूट चुके हैं। तो हमें जो पश्चिम की संस्कृति से उपजे हुए मूल्य है, विचार है, वो पश्चिम के लिए ही उतने मान्य है, भारत के मापदंड के लिए नहीं। उन्हें भारतीय परिप्रेक्ष्य से थोड़ा सा हट करके देखना होगा और उनसे हमें सीख लेना है, लेकिन उस धारणा को भारतीय धारणा नहीं बना लेना है। और दूसरा, कारणों की तलाश करनी है, केवल परिणाम की समीक्षा नहीं करनी है। कारण क्या है? इतने तमाम रिवॉल्यूशन जागरण के बाद, इतने मतलब अध्ययन के बाद अगर लगातार हो रहे तो कारण क्या है? वो पीढ़ी कहाँ जा रही है? और हर एक प्राध्यापक को अब सामाजिक क्षेत्र में उतरने की जरूरत है। अब केवल कॉलेज और अपने विद्यार्थियों और अपने परिवार तक सीमित रहने की जरूरत नहीं है। उन्हें गांव में उतरना होगा, पिछड़े क्षेत्रों में जाना होगा, जहां एक जागरूकता के बीज बोने होंगे। और मैं इसी के साथ कुछ बातें, अगर किसी के कोई प्रश्न हो तो वो भी रख सकता है, अगर किसी का कोई प्रश्न हो। Thank you very much, sir, for sharing your deep knowledge with us. Your session was full enthusiasm and valuable knowledge. And now this is the time to question
If anyone have any question, you can ask to our resource person. Okay, sir. ठीक है, फिर अभी कोई नहीं है। बहुत बहुत Yeah, सभी yeah. का धन्यवाद जिसने Thank you भी very सुना। much, sir. और मैं पूरे सोलापुर सोशलपुर एसोसिएशन आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज के प्रिंसिपल साहब एवं इस संगोष्ठी को कराने वाला जो एक समूह है उसको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस संगोष्ठी में शामिल होने का अवसर प्रदान किया। तहे दिल से सभी का धन्यवाद। Thank you, sir. It will be my honor to invite the chairperson of this session, Professor Sangmeshwar Neela, Associate Professor, Department of Political Science, Walchand College of Arts and Science, Solapur, for his presidential remark. Dr. Sangmeshwar Neela, sir. Hello. Yes, sir. Yeah, you are audible, sir. First of all, I am thankful for organizer giving me opportunity as a presidential remark. Today, Solapur Social Association, College of Arts and Commerce is organized internationally conference on recent trend and recent research methodology in arts and humanities. The दूसरे सत्र के जो अतिथि मान्य है डॉक्टर सुनील कुमार मानस सर, जो जूनागढ़ गुजरात से है, उन्होंने अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर आज अपने सामने एक चिंतन रखा है और उन्होंने एक चिंता व्यक्त की है कि भारत समाज में मूल्यों की पीछाहट हो रही है। तो पाश्चात्य देशों का अनुकरण, संशोधन पद्धति का जो अनुकरण हम कर रहे हैं उसमें भारतीय मूल्यों का जतन होना चाहिए और भारतीय समस्याओं को जो हम फेस कर रहे हैं तो उसको जोड़ना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। और समकालीन जो समस्या है वो समस्या को, समाज में जो घुटन है वो घुटन को हम अपने संशोधन पद्धति से, अपने मूल्यों से टकराना होगा। और इस चिंतन से उन्होंने ये बताया कि भारतीय समाज में जो समस्या है वो भारतीय मूल्यों से हम उसको जोड़ना होगा और पाश्चात्य का जो अनुकरण हम कर रहे हैं वो करना नहीं चाहिए। और उसके साथ ही उन्होंने जो बताया आधुनिक समाज में कॉर्पोरेट जगत से जो विकास हो रहा है वो एक्चुअली विकास नहीं है तो विनाश है। तो आधुनिक समाज में परिणाम की समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन परिणाम के जो कारण है वो कारण की समीक्षा होना चाहिए और कारण की समीक्षा करेंगे तो ही ये समस्या को हम हल कर सकते हैं। और इस तरह उन्होंने सोशल साइंस में जो रिसर्च है वो रिसर्च में मूल्यों का जो महत्व है वो मूल्यों का महत्व आज के अतिथिगण ने अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर उन्होंने ये जो यहाँ पे गहरा चिंतन किया है, इसके लिए मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। Thank you very much, sir, for your chairperson remarks. Thank you. Now we move towards our third session. Welcome back. Now we are starting the third session of this conference. In this one-day international conference, the resource person of this third session is Professor Dr. The resource person of this third session is Professor Dr. S.S.A, sir, Head Department of CGPA College, Akkalkot, and the chairperson of this session, Professor B.P. Raut, Associate Professor, Department of Geography, Kala Mahavidyalaya, Solapur. Now, I have to request Professor M.D. Sheikh, sir, to introduce the today's resource person and today's chairperson. So I would like to request Professor M.D. Sheikh, sir, to introduce the today's resource person. Thank you, sir. Solapur Social Association, Arts and Commerce College, Solapur, organized by one-day interdisciplinary international e-conference on recent trends and research methodology in humanities and social sciences. Now going on third session resource person is Professor Dr. S.S.A, sir.
Professor Head of Department Geography, C.B. Khedgis, Bashveshwar College, Akkalkot. Sir qualified PhD, B.Ed also, and sir also work as a uh, papers in various research journals and also published 11 research papers in various conferences proceedings. Also 46 research papers presented in international, national and state level conferences. Sir also delivered two national and state subjects. Two one research. Sir, your voice is not clear. I see SSR. And also, sir's 7 students complete PhD under the sir's guidance. Also, sir wrote 6 books and published these books in for geography field. Also, 30 articles published in various daily newspapers and personality in the geography field. And lastly, I say one sentence about sir. तुम और हम इतिहास पढ़ते और पढ़ाते हैं. तुम और हम इतिहास पढ़ते और पढ़ाते हैं. अडिटोड सर जैसे सर इतिहास बनाते हैं. थैंक यू वेरी मच. Thank you very much, sir. Now I request the today's resource person of this third session, Professor Dr. S.S.A, sir, Head Department of Geography, C.B. Khedgis College, Akkalkot, to share his knowledge on recent trends and research methodology in geography with us. Dr. Advitot, sir, please share your knowledge with us. Okay, may I audible? Yeah, sir, you are good, sir. Very good, very fine afternoon. And let me thanks Mohammad Sheikh sir with his kind words towards me. A social association is organizing this one-day international conference on research techniques, tools, and development. Like this, they have organized one of the burning issue which we must learn today, some are part of that one. In the morning section, that is Dr. Professor Saptarshi sir has elaborated all the aspects of various key aspects of research, particularly by putting the examples of globalization, then agriculture development. Later on, next resource person, Dr. Sunil Kumar Manas sir, he has, through his literary point of view, he has elaborated various issues which must be essential in nowadays society, and these all issues are burning nowadays. So considering these two lecture, now my lecture is blending of these two, because I thought that there may be some research scholars, research students, or some maybe postgraduate students. From their point of view, I prepared my presentation with blending of so many things. What is the research? What is the priority areas of research? How it blending nowadays? So all these things we have to let us start discussion with this one, and I would like to share my PPT, and one by one we have to make clarification of all these things. There may be some combination of social science, somewhere science, somewhere languages. All these things comes together, and it is my request to you, please, we have to concentrate that what my point of discussion is today is the various issues related to the research, and how we have to cope up with the scenario. Okay, let me share. Please wait for 1 minute.
this one-day multidisciplinary online international conference, and the topic of this discussion, that is emerging trends, or we may call as recent trends and methods in social science research. Why the title is given? Because as far as languages are concerned, Manas sir maybe highlighted all these things, and Saptarshi sir is given in wider context regarding various key aspects of the scientific research. So we have to start with the few emerging trends in social science research. My first point of discussion is to revisit some general areas of concerns in contemporary social science research. Friends, let me discuss what is the research in social science, how it was undertaken earlier, and what are the changes nowadays. And these social science research, earlier we are focusing on qualitative aspects, and nowadays we are blending qualitative as well as quantitative research. When I was taken a major research project by ICSSR regarding socio-economic status of women panchayat members, Jilla Parishad, Gram Panchayat and Panchayat Samiti. There is a hot discussion at the time of interaction meeting whether you are using quantification or qualitative. So I told them that both the techniques, both the methods are important in the social science research. So I got that one and I completed that first major research project. So the social science research is always controversial because somewhere we need some qualitative aspect. Suppose in Panchayat Raj system, the reservation policy is adopted, and what the net result of this reservation policy, to understand this one, the interaction with the Panchayat members, either Jilla Parishad member, Panchayat Samiti member or Gram Panchayat Sarpanch, particularly women. And in that too, marginal sections of the society, that is SC, ST, OBC, VJNT. Such type of research gives us the wide experience of the those who are getting the positions in the Panchayat Raj system. So such type of contemporary social science research is still going on, but nowadays it is blending with the quantification. Then my second point of discussion is to review some of the emerging shifts in social science research, especially taking my first point of tourism sector, as my PhD is completed in tourism domain. So this tourism sector always highlighted local to global. And while discussing various aspects of tourism, the global economic impact of tourism sector and how the tourism is able to solve or remove the poverty, especially those who are marginalized sections of the society. That is the removal of poverty, or you can call it as a pro-poverty tourism approach, which I have used in my another research project, which was submitted by University Grants Commission. And apart from this one, this globalization or global economic policies, how they are impacted on our future research trend also. And that future research trends, as Manas sir has discussed about arts and humanities sections, and now to some extent I am going to highlight some social science aspect and scientific way of approach. Considering this point of discussion, as a science belongs to geographers, they are playing a key role in social science as well as science, as well as some part of commerce, commercial aspect, that is commerce section. What is really science? As we know, the study of our physical and natural world and using systematic observations and experiments. That is what we can study as a physical geographer. And this branch of science is a particular area of study of knowledge of the physical world. Whatever exists today are in and around us, that we consider by observing the changes. Suppose let us take the example of climatic changes, and these climatic changes, how it is influencing on human life. That too we are considering in our research nowadays. Then one more part of this science, systematic body of knowledge, that is systematically organized body of knowledge about particular subject in science. When we are talking changing scenario of climatic aspects or climatic elements, suppose there is a huge change in climatic scenario, that is temperature,
or we can call it rainfall change. This temperature change and rainfall change is something different as compared to social science research, and therefore this something various aspects of these one, or we can perform it methodologically. So this methodological aspects is an activity that is the object of careful study of that, or that is carried out according to developed method. Whatever the methodology or methods we are considering, all these are considered under one title, that is the scientific way of approach. Where we make difference between science and social science as far as research is concerned. In science, we concentrate mainly on laboratory work, experimental work, testing and results. For example, law of gravitation, or you can preparation of COVID-19 vaccination, or in even physics, we can consider the concept of God's spectacle. All these are the aspects of research areas in science. What about social science? In social science, we particularly consider or focus about the qualitative data. In inaugurator lecture, Professor Saptarshi sir is talking about the farmers interactive methods, farmers interaction, those who are hampered by the various globalization elements. For that purpose, we have to only the alternative method, that is called qualitative approaches. So this qualitative method includes interview techniques, which is one of the popular one. For that, we have to choose always focused groups are essential. That is, we are making various groups according to income, according to profession, according to their caste system, according to their education, and that too requires observations first. In social science research, observation plays a very important role. Suppose that one of the destination is emerging as a tourism sector, either it is religious tourism destination, or it is eco-tourist destination, or it is heritage tourist destination. For that point of view, in what way it is emerging, and what will be its net impact on the society. For that purpose, observations are essential. And for this, we need documentation. Because by simple putting the observations, it doesn't mean anything. It is our duty. We have to make in a documentation way. So documentation is one of the important part of this social science research. This research in social science or science, we have to require some approaches. Particularly, as a social scientist, qualitative approach is essential. Just now we discussed about the interviews with the PRI members, or we can have the impact of COVID situation on the labor, daily workers, what it's a result of this COVID situation. For that purpose, we have to use qualitative approach along with quantification, number one. Number two is theoretical basis is important. Any topic we have chosen for our discussion. Let us take the current issues of reservation, about this PRI reservation, or you can call 30% reservation of OBCs. The OBC reservation is now waived off by the Supreme Court. And now, maybe tomorrow, there is a verdict regarding this one. What will be its effect when we remove the reservation policy and we are directly denying that these are the marginal sections of the society? In what way? For that purpose, theoretical base is important. And therefore, central government or Supreme Court is insisting, create the first database of this OBC community. And how to create this OBC database? For that purpose, theoretical base is essential. What are the theories of the development? Development in the sense, how we are going to uplift the society of those marginalized sections of the society, OBC, VJNT, NT, whatever may be there. But it is now the question of OBCs. For that purpose, suppose I am individually taking the project regarding this impact of reservation policy on OBC community, that my individual observation is essential. So that individual observations may lead some concrete results, and that may be converted into
policy making. So various land use theories earlier given by various scholars, then concept of state given by Rajguru, diffusion theories, women empowerment, marketing cycle, price index. Nowadays, Mahila Bachat Gat program is the top priority. What is the result of this Mahila Bachat Gat institution is separate one. There is a government sector doing some best exercise on this Mahila Bachat Gat. Just now I discussed about the reservations for women in PRIs and service sectors. So all these are basic important aspects of research in science and social science. Those who are interested to continue with their research, or those who are just completed the PhD, they must take the project with these various aspects. And nowadays, good governance is one of the topic of Niti Aayog. What is good governance? How it is influencing on Panchayat Raj system, or at even in urban level, Mahapalika level, or at taluka level, we can conduct a small project of our research and submit the policy document to the government. The one of the important quote we may say, that is a social scientist by P.V. Young. What is social research is mean? The systematic method of discovering new facts. As per P.V. Young, what he is highlighting, that he explaining the what is mean by research for social students. So that purpose, he is explaining the importance of social science research. Or he says verifying of old facts. Suppose I'm interested to take a project on the Armory Museum of any historical place, that is heritage tourism. It is my prime duty. I am going to verify the old facts. Without considering the old facts, it is highly impossible to put the present observations, because in history we know the various consequences earlier. Then the interrelationships between two dimensions, A factor and B factor. What is the causal explanations? What is their natural laws which govern them? It means that there are some relationship between the development of historical destination, their ruling states, how the society is performing at that time, whatever the social development made by the various historical rulers. So according to PVN, he again insists that though we are interested in social science research, it is our prime duty that we have to apply scientific method for the understanding. Simply by putting the historical observation, it doesn't mean, but for that purpose, we have to approach our scientific analytical mind of social life of the population at that time. Okay, so this verifying the various facts, it correlates the existing knowledge of the system. Either this one, or we can go for the social science research in these two following factors. Considering Young's observations, what he or various social science researchers highlighted the importance of how the social science research must go forward. That is functioning of the society. It is always important. Sociology people, they are always explaining all these things. That is social aspects, cultural aspects, economic aspects. We must consider while we are taking any social science research, because it shapes the society either or the other way. So before considering any title for our project, let us consider the implications of that titles. Either it is social, cultural, or economic. For that purpose, practical needs are important, because when we are putting our observations in the final conclusion part or suggestive part, policymakers always expecting from the academicians that such type of projects gives the concrete solutions to the problem. Either policymakers or managers in government or civil society or private sector,
these are the bureaucrats, or you can call the private players. They must require some concrete suggestions, solutions to the problem. For that purpose, the prime duty of the researcher, that we have to go to the in-depth of the knowledge of and what is the impact of that one. For that purpose, our database must be based on reliable information and professional analytical mind. That is very important. Sometimes we have observations of, particularly in state elections or in parliamentary election, there are some expertise of making exit polls, but there are only one or two agencies who give the exact conclusion of the exit poll result. So it is because of their reliable information, source of information. That is very important. And for that purpose, we academicians also to accept some kind of professionalism in our academic approach. So the science as a body of knowledge, in social science, we have to accept some scientific approaches. Either it is physical science or natural science or life sciences, or even in management science, because in tourism, if you have destination management role, or even you are having a manager at one of the archaeology department, or even in a small museum of archaeology, and you are heading the post of management, you must know what is the management science, how I can put my museum in a decorative way, though people must visit frequently to that particular armor museum. So in social science, or we can call science of society, up till this discussion leads the further discussion that it is a multidisciplinary conference, and I am going to give some multidisciplinary approach when we are considering geography along with history, geography along with economics, that is economic geography, historical geography, social geography. Such type of multidisciplinary approach we must consider. So dealing with the society, that relationship among groups of people within a community. Suppose I am taking a project titled with the social geography, it means that the group of people, how the people are behaving, and how the area, or we can call it in geography, we are always talking about spatial relationships. So the spatial phenomena, spatial relationship with the particular groups of society, how they interacting with each other, that is the duty of the beauty of that project, and that beauty of that project depends upon taking the multidisciplinary approach. And nowadays government is thinking that when there is two different or three different scholars from sociology, from political economy, from geography, that is social geography, these three scholars come together and put a project to the particular agencies, then they are accepting the concept and approving the project. And my humble request to those who are interested in research area, go through the collaborative research work. Now government is expecting, and as we are having the choice based credit system, CBCS, also they are accepting. Even in skill based courses this year, our university or the central government new education policy, all they are expecting that hereafter not a single domain of knowledge is fruitful, but it is with the collaborative one. So for that purpose, we need some, our knowledge must be refreshed again and again by going through the concept given by the various thinkers, maybe Karl Marx, maybe Alfred Weber, maybe Carl Rousseau, or in Indian context, Gopal Krishna Gokhale, R.P. Mishra, R.C. Datta, various planners, various economists. We must consider their thought in present context, then only our social science research to stand somewhere. For that purpose, as a scientific way of approach, when we are talking about particularly either it is geography, either it is economics, political science, administrative, international relations, sociology, we must concentrate typical areas of collaboration. That from beginning from smaller to larger, that is in wider context, anthropology, psychology, archaeology. Suppose I am considering project in tourism behavior.
I must have the knowledge of psychological aspects of behavior. What are the theories given by the P. Likert, that is Likert scale techniques is there. Suppose I want to apply the multiplier effect in marketing of tourism destination. So how the tourist expenditure along with the multiplier way of application, how it functions, that is very important. So nowadays, the boundaries is blurring. It means that earlier what happens, only geography, that is physical geography, urban geography, social geography, only that much is concentrated. But now, dear friends, the boundaries are blurring, they are merging in each other. So the interdisciplinary approach is essential, and therefore I appreciate Dr. Rajguru, Dr. Narayankar, the team of Social College, other expertise. They are put the this title of the conference, that is multidisciplinary, and I congratulate them. So, in a brief way, how this research, when we want to consider the research in detail, the research is basically a creative work, as we know, and it conducted in a system. It always must be conducted in a systematic manner, and to add something new in existing knowledge. And therefore, we can always talk about to identify the knowledge gap. So this identification of knowledge gap is a prime duty of the academician. There are various methods to identify how it should be, find out the gaps between existing and in the future way, and therefore to devise some new applications, and that would benefit to the society for a betterment of the population. So research has also been defined in various ways as a data scientist, information of the facts or facts collection, advancement of knowledge. It is a process. After all, it is a process, and it is a tedious inquiry, or it is an examination of ourselves. As a scientist, it is the prime duty of mine. Empirical research is not derived from application of logic, rather it is based on observations. What nowadays doing in social science research, only we are making observations, not making practical experiment, not making सर आवाज बंद झाला. म्यूट हो गया है सर. यू आर नहीं है सर, अनम्यूट है लेकिन आवाज बंद है. सर प्लीज चेक योर इंटरनेट कनेक्शन. Dr. Advait. And nowadays society, sir. Yeah. Continue, sir. Within 5 or 10 minutes, sir. Well-being of the society is very important, because now it is expected from for that purpose. What is happening nowadays in the research area? Data is available in large scale, but what is we are doing? We are doing only smaller application of data. That leads to wrong result. So this rapid change in our monumental change, or we can call the future implications, are very better, very larger way. And there's larger implications purpose, we must know it. What is the big picture of society, and in what way we are going to take the seriousness of our research, because technology is playing an important role. Technological disruptions is there. Traditional approach is going out of syllabus maybe. So in brief way, formal social research process is identification of research problems, research finding research gaps, literature review, specifying purpose of my research, determine the specific research questions. To ask the research questions is one of the separate discussion today. If you time permit, that gives 1 hour of discussion. How the research questions may be framed. Important. Suitable methodology is important, because nowadays, after getting PhD, the students may not clarify what is methodology and what is method.
Excuse me, sir. Excuse me, sir. The important. Business, opinion polls. These are the data sets are available. We have to take it and apply for our way. What I know, the difference between methodology and method in brief within 1 or 2 minutes. हाँ मॅडम वेळ आहे थोडासा मी तुम्हाला कॉल करतो मॅडम. Plus the theoretical justification for using methods. So methodology is not a similar to methods. Methods is capturing the means or modes for collecting the data. That is the difference. Public research, interview, survey, etc. How we want to analyze, compute, analyze, or infer from the result. That is the methods. Okay. So this research methods, exploratory research, constructive research, empirical research, qualitative research, philosophy of research, quantitative research, these are the research. But now through this conference, what is the output of this conference is as a multidisciplinary title of the research, it is interdisciplinary collaborative research. Nowadays, everyone is asking about this one. And second part on technology aided empirical research, not only observation, but it should be technology oriented. Big data era is there, not to concentrate on shorter duration of data, shorter duration of research. It never gives the concrete result. So please remember the friends, interdisciplinary research, collaborative research is the now age, and that too with the help of technological aid. So these emerging trends are qualitative and integrative research reports, etc., or having dynamics in their nature. Please do some better research, qualitative research for shared, for well-being of the population, prosperity and progress of our nation. And this blending of science, technology and social science, as a geographer, it is my prime duty. I have to use some data from remote sensing, some data from geographical information system, global position system, application of artificial intelligence, Internet of Things, and drone, robotics. All these things are nowadays available with us, and we have to use GIS, GPS, remote sensing, some statistical techniques. Because friends, remember, nowadays society is depend upon these 4 important pillars. One is social aspects, humanitarian aspect, economic aspects, and environmental aspects. We must consider these are the pillars of our sustainability, and where we are putting our ideology, our database, our research, we have to identify ourselves first, and then we go for these 4 pillars. And we know these sustainable development goals of the area, there are 17 goals and 169 targets. It is not the time to permit me to discuss all these things. But the main goal of up to 2030, the sustainable development goals, as we know, that is 5 P's are there: people, well-being of the people, planet, protection of the Earth's ecosystem, prosperity, peace, partnership. So these 5 aspects are interdependent, and please concentrate your research on these 5 P's. Then any agency, either it is SSR, DST or UGC, any agency must be highlight your project and put your knowledge. So these are the some aspects. As time schedule is running fast, so therefore the research for future well-being, that is natural capital, ecosystem services, human capital, skill, knowledge, experience, economic capital, income, savings and intellectual property, social capital, a relationship among people in the society. In COVID period, it is essential to take the survey. And drivers of globalization: economic, technology, demographic, social, political. These are the drivers. Features of economic development. Looking to the slide, you have to come to know. And slide is maybe with the organizer.
So, my good friends, it is my humble duty to put my thanks to principal, my good friend, Dr. Tamboli sir, Dr. Rajguru sir, Dr. Narayan sir, and his team, and earlier speakers also, and delegates who has listened me patiently. So for this, thank you, one and all. Thank you once again, Dr. Rajguru sir, Narayan sir. Thank you, and my good friend, Dr. Santosh Mane sir. Thank you once again. Thank you very much, sir, for enlightening your deep knowledge with us. Your session was full valuable knowledge about recent trend and research methodology in geography. Thank you very much, sir, once again. And now Thank you, I sir. request to participant, if you have any question about the topic, you can ask the question to Dr. Adil sir. May I one question asking you, sir? Yes, sir. Sir, what do you mean by citation? Pardon, sir? What do you mean by citation? Citation. It is the research part. No, I am not getting your question, sir, properly. Sir, citation म्हणजे काय? It is the research part, sir. When we publish an article, okay? Yeah. If I publish my article in one of the noted journal, so how many research scholars or researchers use and cited our article as a reference point of view? That is my understanding, sir. It goes number one, two, three, number of times. Maybe scholars maybe cited our references as a reference point of view. Yes, correct, sir. Correct. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, thank you. If anyone have any question? Okay. Citation म्हणजे काय विचारलं? Citation. काय म्हणलं मला? Thank you, sir. Now I would like to request today's chairperson of this session, Professor B.B. Rao sir, Associate Professor, Department of Geography, Vasundhara Kala Mahavidyalaya, Solapur, for the chairperson views. Sir, am I audible, sir? Yes, you are audible, sir. I express my sincere thanks firstly to the Principal of Social College of Arts and Science, Convener Dr. Sachin Rajguru sir, Co-Convener Deepak Narayankar sir, and all teaching and non-teaching staff of Social College. I also especially thanks to Santosh Mane sir. I am very glad to express my views about chairperson like this knowledgeable session, which covered the topic emerging research trends and methods in social sciences by Dr. S.S.A sir. General areas concerned in contemporary social science research, tourism, and other examples are given by the Advocate sir. Several new ideas and concepts and techniques have also explained by Dr. Advocate sir, which is very useful and beneficial for the new emerging researcher. This is the one of the best thing that the research is done not for the quantity, but it is creating quality also. Sir have given some reviews of emerging shifts in social sciences and also given data analysis types, research types, purpose of the research to find out the truth which is hidden and which has not been discovered as yet. Sir also focused on formal social research process, blending of sciences, technology, and social science, 4 pillars of sustainable development. Also, sir has given 5 P's for the sustainable development is essential
for any development process. Sir have given drivers of globalization, how it is important and significance for the social well-being of the society. As according to Auguste Comte, who is the father of the sociology, first rejected speculations, logic, and theological thinking with rational analysis. In 1848, Auguste Comte given positivism approach for the researcher. It is my destiny that I express my view on this topic, which is covered by Dr. Advitot sir. I am very grateful to Dr. Advitot sir, who have given directly and indirectly guidance to all of us in this successful conference, which is held at Social Arts and Commerce College. They highlights the subject content has been developed, refined and restructured with several points covered in this session by respected Dr. Advitot sir. Several news ideas also given by them with various new techniques and methods, which is useful for the new researcher also. Sir explained that conducting social research requires clarity of concepts and theoretical knowledge of scientific behavioral studies. The knowledge is essential not only for social sciences researcher, but also for those engaged in undertaking researcher on evaluating government schemes. Also very useful these thoughts. It is my pleasure to express my views forward all of you, thanking for giving this opportunity as a chairperson for this session. Thank you once again. Thank you very much, Dr. Rao sir, for the presidential remark for this third session and given your valuable time. Thank you very much, sir. Now we are moved toward our fourth session and moving toward to last and fourth session of this conference. Once again, good afternoon, everyone. I welcome you all in our fourth session in one-day international e-conference. The resource person of this fourth session is Professor Dr. Yogesh Kumar Tiwari. He is a professor in Pandit Prabhunath Shukla University, Sadol, Madhya Pradesh, and the chairperson of this session is Professor Dr. D.S. Harwaga sir. He is the associate professor, Department of Geography, Mauli Mahavidyalaya, Vadala. So I would like to request Professor K. Muchale to introduce the today's resource person. Professor Muchale, ma'am. Thank you very much, sir. Am I audible, sir? Yeah, you are audible, ma'am. Okay. Good afternoon, everyone. Very good afternoon. I'm very much happy and overjoyed to take the opportunity to introduce our chief guest of the fourth session of the webinar, that is Mr. Yogesh Kumar Tiwari, sir. Professor Yogesh Kumar Tiwari, sir, is from Pandit Shambhunath Shukla University, Madhya Pradesh. He has cleared NET exam, as well as he has done his MPhil and PhD in his subject, that is Hindi. He has published 30 papers in international and international conferences, as well as 20 paper presented. Then he has also conducted 3 workshops so far. He has been resource person in 3 conferences. Sir, you have given your best by sharing your expertise and knowledge in every way possible to help every learner. Thus, I am sure that all the participants here are also eager to hear you.
Thank you very much to Deepak sir. Thank you, ma'am, for the introduction of the today's resource person. I request the resource person of this post session, Professor Dr. Yogesh Kumar Tiwari, Professor of Pandit Shambhunath Shukla University, Shabdol, Madhya Pradesh, to present his views and knowledge about the Adivasi Samaj की स्थिति एवं तिवारी सर जी आप अनम्यूट हो। माइक ऑन करें। सर योगेश तिवारी सर जी आप अनम्यूट माइक हो। ऑन करें। माइक ऑन करो। माइक आपका माइक ऑफ है तिवारी सर जी। माइक कैमरा तिवारी सर अपना माइक ओपन कीजिए। हेलो। यस सर, यस। हाँ सर आप आवाज आ रही है, ठीक से आवाज आ रही है, अच्छी बात है सर। चलिए धन्यवाद। सोशल एसोसिएशन आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज शोलापुर को मेरा अभिनंदन। साथ में अध्यक्ष महोदय DS हरवालकर एवं संयोजिका मैम KM मुछाले, सभी को मेरा अभिनंदन एवं जोहार। जैसा कि सुन पा रहे हैं कि मेरा जो विषय है वो आदिवासी समाज की स्थिति एवं अवस्थिति, इस विषय पे मुझे बोलना है। विशेष संदर्भ हिंदी साहित्य को लेकर के है। जैसा कि पूर्व में मानस जी ने समकालीनता पे प्रकाश डालते हुए वर्तमान समाज और की जो मूलभूत समस्याएं, विशेष तौर से दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग, महिला वर्ग, वृद्ध और किन्नर, शायद समकालीनता ने ही इन्हें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विमर्श के दायरे पे खड़ा किया। ये जो साहित्य में विमर्श निकला, यही आगे चल करके अध्ययन के रूप में हमारे सामने आया। जैसे कि पहले सर्वप्रथम स्त्री विमर्श आया और आज नया डिस्कोर्स चालू हो गया, स्त्री अध्ययन। हिंदी साहित्य में दलित विमर्श आया, आज दलित अध्ययन हो रहा है। आदिवासी साहित्य आया, आदिवासी विमर्श आया तो आदिवासी अध्ययन प्रारंभ हुआ। और वर्तमान में दो विमर्श और हैं, एक तो है किन्नर विमर्श और दूसरा है वृद्ध विमर्श। ये विमर्श के घेरे क्यों साहित्य में, इसके कई उत्तर या उठते रहे हैं। क्या इन विमर्श में जब हम कर रहे होते तो क्या वाकई विमर्श हो रहा है या लेखनी ही चलाई जा रही है, स्वानुभूति के लिए या सहानुभूति के लिए? प्रश्न जटिल है। जब मैं इस आदिवासी बेल्ट आया, इसके पहले जो मेरे मन में आदिवासी शब्द या जनजाति शब्द जैसे ही कानों में पड़ता था तो मेरे मस्तिष्क में ऐसा चित्र भरता था जो जंगल में, पठार में या दुर्गम स्थानों पर निवासरत आम आदमी जो सर पे सींग लगाए, जैसा कि हम लोग हिंदी वीडियो में देखते रहे कि एक मनोरंजक वस्तु के रूप में उनका उपयोग किया। हमने उनको ऑब्जेक्ट माना, उनको मनोरंजन के रूप में प्रस्तुत करते करते केवल हम आनंदित होते रहे। साहित्य सृजन में भी यही चीज हुआ। जिस तरह आदिवासी समाज को लेकर के 1899 में पहला उपन्यास लिखा गया, बसंत मालती,
उसमें आदिवासी समाज केवल एक मनोरंजक वस्तु के रूप में भाषा, चीजें कुछ बदली आजादी के। इसके बाद 2-3 उपन्यास, कोरा कुमारी, वन विहंगनी और कचनार। कचनार ने स्थितियों को बदला और फिर देवेंद्र सत्यार्थी का रथ का पहिया आया, जिसमें पहली बार ईसाईयत का प्रभाव देखने को मिला। लेकिन अब यहाँ जो केवल वहां मनोरंजक की वस्तु बन गई थी, अब यहाँ वो उनके हम सांस्कृतिक परिदृश्य को बताने या समझने लगे। 90 के दशक आते आते वास्तविक रूप से आदिवासी विमर्श साहित्य में दिखाई दे, या ये कहें कि एक तरफ स्त्री विमर्श जैसा उठा, उसको समुचित धरातल मिल गया। दलित विमर्श उठा, उसको समुचित धरातल मिल गया। लेकिन इस विमर्श के दायरे में बहुत कुछ हमने खोया भी। आदिवासी विमर्श एक ऐसा विमर्श लगा जिसने हमें खोना नहीं है, केवल और केवल पाना ही। इस विमर्श के दायरे पे हमने जब अध्ययन प्रारंभ किया तो जो स्रोत मिले, ये स्रोत हमें अपने सनातन की ओर ही लिए जा रहे हैं, प्रकृति की ओर ही लिए जा रहे हैं। ये संस्कृति को आत्मसात करने की जरूरत है। प्रश्न एक बहुत जटिल हुआ इनके विकास का, इनको शिक्षित करने का। 2 चीजें सामने हैं, जैसा कि मानस जी ने विकास के परिप्रेक्ष्य में कहा, विकास नहीं है विनाश भी हो सकता है। विकास अगर समुचित दिशा में चले तो उन्नतिशील है। एक कार्यक्रम चलाता है। और के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हमारे यहाँ असल में एग्जाम ड्यूटी भी चल रही है और कोविड का एक सिस्टम है, उसमें एक केस आ गया था तो वो सूचना आई मेरे पास अभी। बहरहाल ये मैं अपने मूलभूत चीजों पे आता हूं कि आदिवासी विमर्श जो हमें मूल्यों की ओर ले जाता है, सबके मूल्य थे। हर मूल्य जो हमें, यानी सभी मूल्यों का जो मूल पहुंचता है, सभी मूल्यों का मूल वो है इंसान। ये हम आज जैसे जैसे शिक्षा जगत पे आ रहे हैं, वास्तविक शिक्षा जगत से एक तरह से कट, हम व्यवहारिक होने नहीं हुए, हम किताबी हुए। जैसा कि वीर भारत तलवार हमेशा कहते रहे कि आदिवासियों पे जब लिखा गया तो कुछ लोगों ने कुछ ग्रंथ उठाए, पढ़े और आदिवासी की स्थिति और अस्थिति पे लिखने लगे। दूसरा, आए भ्रमण किए और चले गए और बंद कमरों में जाकर के लिखने लगे। तीसरा, वो व्यक्ति आए, रहे, समझे और उन्हीं के परिवेश में रहते हुए उनकी समस्याओं को समझा और लिखा। इन तीनों तरह में जो हमें निकल के आया, फील्ड पे जब गए तो जब साहित्य का अध्ययन कर रहे तो उपन्यासों में बड़ी विषमताएं देखने को मिली। विषमताएं इस बात की थी कि किसी उपन्यास में बैगा को किस तरह परिभाषित किया गया है और वास्तविक में बैगा है क्या। जैसा कि एक बड़े साहित्यकार नीलय उपाध्याय जी हैं, उन्होंने एक उपन्यास लिखा पहाड़, उस पर मूवी भी बनी थी द माउंटेन मैन माझी। वास्तविकता से कोसों दूर, ना उसमें विडंबना इस बात की है कि उन्होंने आदिवासी को ही डिफाइन नहीं कर पाया, और ये विडंबना केवल उनकी ही नहीं अपितु हमारे इस भारतीय संविधान की भी है।
जिसमें अनुच्छेद 332 में आदिवासी को जनजाति कहा, जहां जात की कोई अवधारणा ही नहीं, वहां इनको हमने जात के घेरे में कैसे डाला। एक जटिल प्रश्न ये भी है, अक्सर कई, चाहे विनायक तुमराम जी हो या रमका गुप्ता जी हो, दोनों लोगों ने इस विषय पे लिखा आदिवासी कौन। अध्ययन के उपरांत में भी केवल झामाझोल की स्थिति बनती रही, स्पष्ट छवि हमारे सामने नहीं आ पाई कि आदिवासी कौन। जब हम बाहर निकले, हमने फील्ड पे देखा, तो जो नागार्जुन जी ने निराला के ऊपर 4 लाइनें कही थी, वो आदिवासी की परिभाषा को पोते डिफाइन करते। बाल छितरे, दृष्टि पैनी, फटी लूंगी, नग्न तन, किंतु अंतर दीप्त था आकाश सा। आदिवासी की जो पहचान है वो आदिवासियत से है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ 705 अनुसूचित जनजाति है और इसके बाद 75 आदम जनजाति है, लेकिन हमारे भारतीय आदिवासी अपने को जनजाति कहलाने के पक्ष में कभी नहीं। वो अपनी पहचान आदिवासियत में देखते हैं, आदिवासी में देखते हैं। आदिवासी 2 चीजों का द्योतक है, एक आदि समय का और दूसरी आदिम अवस्था का। समय परिप्रेक्ष्य में जो वर्ग शिक्षित हुआ उसमें चालाकी अनायास ही है। एक बालक होता है जो बाल्यावस्था में निर्विकार रूप से बात करता है, उसके मन में कोई छल छद्म कपट नहीं रहता। लेकिन जैसे जैसे वो शिक्षा की सीढ़ियां चढ़ता जाता है, उसमें ये दुर्गुण भावनाएं अपने आप आने लगती है। क्या वास्तविक शिक्षा यही है? और अगर वास्तविक शिक्षा यही है जहां इंसानियत दम घोटे, तो हमें आदिवासियों को अशिक्षित ही रखना है, क्योंकि तभी हमारी संस्कृति और सभ्यता संरक्षित हो सकती है। लेकिन प्रश्न जटिल है, अगर हम किसी को अशिक्षित रखकर संस्कृति को बचाना चाहते हैं तो क्या संस्कृति बचेगी? संस्कृति और परंपराएं समय के साथ बदलती हैं। जैसा कि आजकल अक्सर कहा जाता है कि आदिवासी संस्कृति बदल रही है, तो ये एक भटकाव के रास्ते पे हम ले जाना चाह रहे, कहना चाह रहे, क्यों ना बदले? समय परिप्रेक्ष्य में उनको भी बदलना होगा। एक समय वैज्ञानी यानी बैगा जो विशेष तौर से चिकित्सक के रूप में जाने जाते थे, मैं जिस बेल्ट में कार्यरत हूं, इसी के पास एक मध्य प्रदेश का पिछड़ा जिला डिंडौरी, उसके नाम के आगे उसमें पिछड़ा शब्द लग जाता। बड़ा ये पिछड़ा शब्द चुभता है मुझे। जहां की संस्कृति इतनी उच्च है, जहां की परंपराएं इतनी उच्च हैं, शिक्षा का स्तर नहीं है, मानते हैं इस चीज को, मैं मानता हूं कि शिक्षा का स्तर नहीं है, इसलिए हम केवल इनको पिछड़ा कह रहे हैं। लेकिन हर मामले में शिक्षा छोड़ करके वो हमसे उच्च है। प्रकृति को सभ्य लोगों ने गंदा किया, इन शिक्षित लोगों ने गंदा किया। पूरी गंदगी अगर कहें तो
तथाकथित शिक्षित लोगों में है जिन्होंने इनको गंदा किया? ये विचार करने का प्रश्न है। एक उपन्यास 1950 में तेजिंदर जी ने लिखा था, अगर आप लोगों को किसी को मिल जाए तो ये जरूर पढ़िएगा, काला पादरी। ये काला पादरी उपन्यास जब मैंने पढ़ा तो उपन्यास के भीतर जाकर के जो एक आदिवासी पादरी बनता है किस तरह परिवर्तित हो जाता है, और जब वाकई उसको लगता है कि मैं क्या अपने भाइयों के साथ गलत कर रहा हूं, और वो बदलने का प्रयास करता है, अपनी मूलभूत चीजों की ओर जाने का प्रयास करता है, तो उसको जाने नहीं। किस तरह इनका मानसिक शोषण धर्म परिवर्तन के नाम पे हुआ, और इस देश को लेकर के कई उपन्यास लिखे गए हिंदी साहित्य में, जिसमें मैं आपको बताऊं एक पूरा मूवमेंट चलाया। विनोद कुमार जी झारखंड में है, उनके 2 उपन्यास बहुत चर्चित रहे, एक समर शेष है और दूसरा आगे आया था रेड जोन। दोनों में ये जो धर्मांतरण की स्थिति है और धर्मांतरण के बाद क्या है, इस स्थिति और स्थिति के बीच का खांचा साफ कर दिया विनोद कुमार जी ने। साथ में भूमंडलीकरण के दौर में आदिवासी कैसे पलायित हुआ और कैसे विस्थापित हुआ। पलायन और विस्थापन 2 प्रक्रियाएं थी, और मैं कह दूं कि झारखंड बेल्ट और छत्तीसगढ़, यहां सबसे ज्यादा पलायन और विस्थापन, पलायन से ज्यादा विस्थापन हुआ। तो विस्थापन जब होता है तो कोई भी संस्कृति है वो टूट जाती, संस्कृत का विकास नहीं होता, संस्कृत टूट रही होती है, और संस्कृत का टूटना ही हमारे लिए घातक है। आजकल जो सोर्स हो रहे हैं, ये रिसर्च हो रहे हैं, तो इस रिसर्च में हम फील्ड में कभी नहीं जाते। उपन्यास लिखे गए, बहुत सारे उपन्यास लिखे गए, वीरेंद्र कुमार जी का डूब लिखा गया, पार लिखा गया, गगन घटा गहरानी, संजीव जी का फांस, आपके महाराष्ट्र में ही काई चंद्रपुर बल्लातार की कहानी है, और ये महुआ माझी का मरंगोड़ा नीलकंठ हुआ, मैं बोरशिल्ला हूं। एक रणेंद्र जी हैं, रणेंद्र जी का उपन्यास गायब होता देश, ग्लोबल गांव का देवता, गूंगी रुलाई का कोरस जैसे उपन्यास जब हमारे सामने आते हैं तो आदिवासियों की स्थिति और स्थिति दोनों साफ होती है। जैसा कि एक प्रश्न और भी मुझे हमेशा कुरेदता रहा है, प्रश्न उठता रहा है 5000 साल, 5000 साल, 5000 सालों से हमारे ऊपर अत्याचार, ये जो दलित विमर्श कह रहा है, तो कुछ लोगों का मानना यह है कि दलित विमर्श और आदिवासी विमर्श एक ही धारा के होने चाहिए, ये 2 धाराओं पे नहीं जाने चाहिए थे, ये एक ही होना चाहिए। लेकिन प्रश्न ये है कि आदिवासी विमर्श के मानक अलग हैं और दलित विमर्श के मानक अलग हैं। जहां दलित विमर्श कह रहा है कि दलित विमर्श ये कह रहा है कि हमें दलित द्वारा ही लिखा गया साहित्य ही दलित साहित्य है, क्योंकि उसमें स्वानुभूति की पीड़ा है। आदिवासी विमर्श ने कभी ऐसा नहीं किया। यही स्थिति जो दलित विमर्श की है कि दलित की पीड़ा दलित ही लिख सकता है, आदिवासी की पीड़ा आदिवासी लिख सकता है, आदिवासी ने कभी नहीं कहा। जबकि स्त्री विमर्श ने भी यही प्रश्न खड़े किए कि एक स्त्री की पीड़ा एक स्त्री ही लिख सकती है।
वंदना टेटे जी से मुलाकात जब मैं हुई तो मैंने ये प्रश्न उनसे किया कि क्या मैम, जिस तरह स्त्री भी कहता है कि स्त्री साहित्य वही है जो स्त्री द्वारा लिखा जा रहा है, दलित साहित्य वही है जो दलितों द्वारा लिखा जा रहा है, तो क्या आदिवासी साहित्य भी वही है जो आदिवासियों द्वारा लिखा जा रहा है? वंदना टेटे जी का साफ कहना था कि आदिवासी विमर्श कोई एक वर्ग या समूह नहीं लिखेगा। जिस विषय में आदिवासियत की बात है वही आदिवासी विमर्श है। दूसरी तरफ एक प्रश्न इसमें विमर्श के जो दायरे बढ़े, कभी कभी मुझे लगता है कि समकालीनता में केवल विमर्श ही बचेगा, साहित्य क्या अपने सौंदर्य से भटक जाएगा? जिन मूल्यों की बात हमारा साहित्य कर रहा है, जो प्रेमचंद के समकाल में था, बाबा नाग, ये निराला जी के समय में था, प्रसाद के समय में था, वो 90 के दशक के बाद केवल विमर्शों में ही आकर के क्यों खड़ा हो गया? मैं अगर पिछले 25 सालों के उपन्यासों की बात करूं तो जो भी उपन्यास उठाता हूं उसमें कहीं ना कहीं मुझे विमर्श की बू आती है। हमें उसमें इंसानियत की खुशबू आनी चाहिए। केवल इन विमर्शों के दायरे में मुझे केवल एक ही विमर्श अच्छा लगा, वो है आदिवासी विमर्श। ऐसा मैं केवल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसने लेखनी चलाने के लिए सभी को जगह दी। जो आदिवासियत को लिखे वही आदिवासी साहित्य है, और जो आदिवासियों के हित की बात करे वही आदिवासी विमर्श है। वो किसी भी वर्ग से आए, किसी भी धर्म से आए, स्वागत। जबकि स्त्री विमर्श में जिस तरह रेडिकल फेमिनिज्म आया, आप लोग जानते होंगे, 2 विमर्श तो बहुत अच्छे लगे, 3 वेव्स आई फेमिनिज्म में। पहला उदारवादी नारीवाद, उसने सपोर्ट किया, दूसरे ने हक मांगा, और तीसरे ने स्वतंत्रता ही मांगी। स्वतंत्रता नहीं मांगी उन्होंने स्वच्छंदता मांगी, और स्वच्छंदता और स्वतंत्रता में बड़ा अंतर है। आदिवासी समाज स्वतंत्र रहना चाहता है, स्वच्छंद नहीं। मैं दोनों के भेद को ही स्पष्ट दे रहा हूं। आदिवासी समाज स्वतंत्र रहना चाहता है, वहां कहीं भी किसी भी प्रकार की जड़ता की जगह नहीं है। वहां स्वतंत्र है, तो आप स्वतंत्र है, इसलिए आप चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, वो अपना जीवन साथी चुन सकता है किसी भी आदिवासी समूह में। थोड़ा बंदिशें हैं, लेकिन बंदिशें इतनी जड़ नहीं है। दूसरा, आदिवासी संस्कृति जहां घेरे पे थी और कैसे वो चीजें हमारे सामने से छूट रही हैं। मैं केवल, जैसा कि मानस जी ने कहा था, 30 सालों पहले मैं गांव में था। गांव से जुड़ा रहना, गांव और शहर की संस्कृति क्या है वही अच्छे से बता सकता है जो गांव से भी जुड़ा रहा हो और शहर से भी जुड़ा रहा हो। हमें गांव में रह करके शहरी जीवन बड़ा अच्छा लगता है कि क्या ठाट बाट से व्यक्ति जीवन जी रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है, क्या वहां सुकून है? गांव की 2 वक्त की रोटी भले ही प्याज और नमक के साथ खाई गई हो, वो सुकून देती रही हैं। हमें आपाधापी के इस मकड़ जाल में आकर के हम फंस गए। हमसे हमारी देशज चीजें छूट गई हैं। आज भी हम लोगों में कई लोग बैठे होंगे जो होला का स्वाद मुंह में नाम आते ही मुंह में पानी आता है, लेकिन क्या वो होला जो हम गांव में आज से 30 साल पहले बैठ करके खा रहे थे मिल पा रहा है? वो ताजी हवा क्या हमें मिल पा रही है?
हम सुकून ढूंढने शहरों की तरफ चले। और अभी कोविड महामारी में हमने देखा भी कि जब एक आपातकाल की स्थिति बनी, लोग अपने गांव पे उनका केवल इतना ही कहना था कि कम से कम वहां गांव में तो 2 वक्त की रोटी तो मिल जाएगी। यानी जिस इंसानियत की बात हमारा साहित्य कर रहा था, वही इंसानियत की बात आदिवासी साहित्य भी कर रहा है, जिसमें सर्वे भवंत सुखने की बात है, सर्वे संत निरामया की बात है। हमें आदिवासी साहित्य में, मैं एक चीज बहुत स्पष्ट कर देना चाह रहा हूं कि आदिवासी साहित्य में हमें कोई भी व्यक्ति ऐसे खलनायक के रूप में नहीं दिखाई देता। जबकि हम देख रहे हैं कि दलित साहित्य जब पढ़ रहे हैं तो किसी एक वर्ग के प्रति नफरत के बीज भरे, स्त्री विमर्श पढ़ रहे हैं तो किसी पुरुष वर्ग के प्रति नफरत के बीज भरे, किन्नर विमर्श पढ़ रहे हैं होते हैं तो मुझे गैर किन्नर के प्रति एक नफरत का बीज भरा हुआ है। और इसी जगह अगर हम वृत्त विमर्श पढ़ रहे हैं तो उस वृत्त विमर्श में युवाओं के प्रति नफरत का बीज भरा जाता है। और जब तक ये नफरत का बीज साहित्य में भरा जाता रहेगा, क्या साहित्य समृद्ध हो सकता है? एक छोटा सा प्रश्न। इस नफरत के बीज को कहीं भी जगह आदिवासी साहित्य में नहीं दी, वहां अपनाया गया। गैर आदिवासियों को भी सदान कह करके अपनाया गया। जो कई पीढ़ी पहले आ गए वो सदान कहलाए, जो पहली पीढ़ी आए वो दीकू है। दीकू दुश्मन को कहते हैं, लेकिन उसी की अगर 2-3 पीढ़ी बढ़ गई तो सदान हो गया, और सदान माने साथ रहने वाला, ये जगह उनको दे दी। ये आदिवासी संस्कृति। मूल्यों की बात करें तो जड़, जंगल, जमीन, इसकी बात करते हैं। प्रकृति कैसे कितना कम से कम लें, बहुत हम सभ्य समाज की जो बात कर रहे हैं वो प्रकृति से कितना अधिक से अधिक ले, ये है। लेकिन आदिवासी संस्कृति ये कहती है कि प्रकृति से कितना कम से कम ले, जितने में हमारा जीवन यापन हो जाए। हमें संग्रह की जरूरत नहीं। अब मैं बहुत पशु और मानव का जो एक अंतर है, वैसे मानव शब्द तो अपने पे महान हो गया, लेकिन वर्तमान या कथाकथित मानव की बात कर रहा हूं। जो शिक्षित हो गया है वो कितना मिल जाए, कितना आ जाए, हम कितना किसको लूट लें, कितना इकट्ठा कर लें, कितना संचय कर लें। जहां संचय की भावना आ रही है ये मानव में है, पशुओं में नहीं। आदिवासियों को अगर हम पशु कह रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने उनको जंगली कहा है। जंगली जंगल में रहने वाले यानी पशुओं को भी कहते हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे जब हम आजाद नहीं थे और 1931 की जनगणना में इनको जंगली शब्द से कभी आदम कहा गया। तो जो चीज आज भी डिबेट का विषय है कि भारतीय संविधान में इस पूरे समूह को आदिवासी नहीं कहा गया, ये एक उनकी पीड़ा है। इसको हमें, क्योंकि वो अपनी पहचान गारो से बताते हैं, खासी से बताते हैं, गोंडी से बताते हैं, बैगानी से बताते हैं, संथाली से बताते हैं, हो से बताते हैं, मिजो से बताते हैं। वो ये नहीं कहते कि हम जनजाति हैं। अगर किसी भी आदिवासी से पूछा जाए तो कहता है मैं आदिवासी हूं, ना कि जनजाति। एक विडंबना और है, हमारे ही देश में
3 स्टेट के मैं नाम लेना चाहूंगा, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश। एक ही जात जिसको मल्लाह कहते हैं, यही मल्लाह हमारे मध्य प्रदेश में ओबीसी में आती है, यही मल्लाह बिहार में दलित में आती है, और यही मल्लाह झारखंड में आदिवासी में आती है। तो एक चीज ये स्पष्ट होना चाहिए कि आदिवासी कौन, इस पे सार्थक और उचित लेख होना चाहिए। जैसा कि मैं मीणा के बारे में बताया, ये संविधान की त्रुटि है या बौद्धिक वर्ग की गलती है। मीणा और मीना 2 शब्द हैं, अंग्रेजी में दोनों को एक ही लिखा जाता है, चाहे मीणा लिखिए और चाहे मीना लिखिए। वास्तविकता यह है कि मीना जनजाति थी, मीणा राजवंशों से था और ये क्षत्रिय थे। लेकिन संविधान में दोनों की स्पेलिंग एक होने का फायदा एक वर्ग विशेष ने ले लिया, और जब एक वर्ग विशेष ने ले लिया तो वास्तविकता यह है कि जिस मीनाओं को हक था मीणा ले गए, और यही मीना कहीं आदिवासी हैं और कहीं ओबीसी। तो जब अध्ययन करते हैं तो इन चीजों में भी हमें कई विसंगतियां दिखाई देती हैं। इस पे भी एक सार्थक और उचित प्रयास से शोध हो तो कुछ चीजें निकल के सामने आए। आखिरी और अंतिम बात, जैसा कि हम लोग अक्सर पाश्चात्य संस्कृत की बात करते हैं, और पाश्चात्य संस्कृत के आते ही कोई भी विचार या कोई भी सिद्धांत हम कहते हैं यहां से आया, यहां से आया। मुझे लगता है कि आर्यों के पहले जो यहाँ लोग थे, जैसे कि मान्यता है कि आर्य बाहर से आए, वैसे ये भी एक विवादित ही विषय है कि आर्य बाहर से आए कि यहाँ के हैं, ये अभी भी विवादित है। इस पे भी शोध, यानी शोध के जो नए विषय होने चाहिए उस पर कोई भी लेखनी नहीं उठा रहा, फील्ड पे उतर के उस पर कार्य नहीं कर रहा। एक इन आदिवासियों में मैं 4 स्टेटों के नाम लूंगा, जिसमें आपका उत्तराखंड, वहां रंगबंग यानी युवाग्रह, गोटुल छत्तीसगढ़ का बस्तर मध्य प्रदेश, गोटुल का थे यहाँ, ये युवाग्रह हुआ करते थे। धुमकड़िया, घसरवासा, ये 4 युवा ग्रहों का जिक्र भी आदिवासी संस्कृति में मिलता है। इन्हीं युवा ग्रहों में लड़का जैसे ही किशोरावस्था में आता है, लड़कियां जैसे ही किशोरावस्था में आती हैं, ये साथ मिलकर के रहते हैं और जीवन यापन से संबंधित सारी चीजें सीखते हैं। यही वो विवाह भी करते हैं। दिन भर भले ही वो घर पर रहे, माता पिता के साथ रहे, लेकिन संध्या के वक्त ये लोग घुमकड़िया, घसरवाशा या रंगबंग, गोटुल, ये जो युवा ग्रह थे वहीं ये निवास करते रहे, वहीं ये जीवन की शिक्षा लेते रहे। लेकिन आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मुझे कहीं भी गोटुल के केंद्र नहीं दिखाई। ये उनकी संस्कृति से दूरी है। दूसरा, विस्थापन एक सबसे बड़ी समस्या आदिवासी समाज पे रही। विस्थापन के बाद की स्थिति नारकीय जीवन हो गया, क्योंकि विस्थापन से इनके जो जेहार्थान थे, जो इनके पूजा अर्चन के स्थल, सानदगिर थी, ये सब छूट गया। इनकी मान्यता इतनी थी, अगर इनके पूर्वज घर पे या जहां खत्म होते थे, उनका शव ये कहीं जला करके या घाटों पे विसर्जित नहीं करते थे, उनको वो अपने आंगन में गाड़ते थे। उसे पाथर गाड़ा कहा जाता था। ये पाथर गाड़ा की भी एक संस्कृति थी।
हमें इस पर भी ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, जबकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इतने उपन्यास लिखे गए लेकिन किसी में भी पाथरगाड़ा का जिक्र नहीं। एक साहित्यकार हैं, उपन्यासकार कहूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, राकेश कुमार सिंह। उनके 4 उपन्यास आए और चारों चर्चित हुए। पठार पर कोहरा कई लोगों ने सुना होगा। पलामू के बेल्ट पे लिखा गया पठार का कोहरा, जहां खिले हैं रक्त पलाश। क्योंकि आदिवासी में आप लोगों ने अक्सर सुना होगा चंद्रपुर बल्लारसा में किस तरह घटनाएं नक्सलवादी कर रहे हैं। यह बस्तर का बेल्ट, सुकमा का बेल्ट आप लोगों ने सुना होगा कि किस तरह नरसंहार करते हैं। ये नक्सलवाड़ी से उठा एक मूवमेंट था जो कि जाति करने वालों को मार करके स्वतंत्र हुए, उनकी दास्ता से मुक्त हुए और फिर इन्होंने बंदूक डाली। लेनिन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा कि सत्ता बंदूक की नोक से निकली। ये इतना घातक सिद्ध हुआ हमारे यहाँ, कुछ कहने की बात नहीं। एक मूवी बनी थी इसी आदिवासी परिप्रेक्ष्य को लेकर के, जिसमें बहुत बढ़िया घटना है। अगर अवसर मिले तो आदिवासी संस्कृति को समझने का और आदिवासियों की स्थिति और अवस्थिति का, तो एक मूवी चक्रव्यूह हुआ है। चक्रव्यूह में बहुत ही गजब का प्रयास किया गया। जैसा कि मैं कहूं, और आदिवासी स्थित और अवस्थित के लिए समझने के लिए विनोद कुमार जी का, जो कि जीवंत उदाहरण है, उनके 2 उपन्यास थे। एक 1950 से 2000 के बीच की घटनाओं को केंद्रित करके लिखा गया और जिसके नायक हैं शिबू सोरेन। एक जीवंत व्यक्ति को उन्होंने नायक माना। यही व्यक्ति जब उनका दूसरा उपन्यास आता है 2000 से 2015 के बीच, शिबू सोरेन नायक ना बन करके खलनायक बन के उभरा। दोनों को समझना है कि जो अगुआ झारखंड की मांग को लेकर के लड़ते रहे, जैसे ही वो भी सत्ता पाने गए वैसे ही वो सामंती व्यवस्था के पोषक। तो जो आदिवासियों की ये जो आदिवासियत थी वो जो बदल रही है, ये सबसे बड़ी घातक स्थिति है। हमें शिक्षित करने, इन आदिवासी समाज को शिक्षित सुव्यवस्थित करने के साथ साथ उनको ऐसी स्थिति पे ना जाएं, इसके लिए भी प्रयासरत होना पड़ेगा। अन्यथा ये एक विकृति होगी समाज की, देश की। सभी को मेरा धन्यवाद। किसी का कोई भी प्रश्न यदि हो तो मैं प्रस्तुत हूं। नो सर, वेरी गुड। सभी को मेरा धन्यवाद। नारायणकर सर, नेक्स्ट। Am I audible, sir? Thank you very much, sir. Thank you very much, sir, for highlighted your deep knowledge with us. Your session was fully valuable knowledge about the Adivasi Samaj ki sthiti evam asthiti. Now I request the participant, if you have any question regarding the topic of Adivasi Samaj ki sthiti evam asthiti, you can ask the question for our resource person.
Okay. Thank you, sir. Now I request to Dr. D.S. Harwalkar, sir, for their chairperson views of today's topic. Thank you, sir. Audible, sir? Narendra, sir? Yes, sir. Yes, आवाज sir. आ रही है मेरे? Okay, thank you, Yes, sir. you are audible, sir. Yes. Good afternoon, all of you. Today is Solapur Social Associations Arts and Commerce College organized one-day international conference on recent trends and research methodology in arts and science. In this last session, fourth session, today's resource person in this session, Dr. योगेश कुमार तिवारी जी, उन्होंने अपनी मत प्रयास में जो आज का विषय था उनका आदिवासी समाज की स्थिति एवं स्थिति, इस स्थिति में सर जी ने बहुत वैल्यूएबल जो उपन्यास थे, नॉवेल थे, कादम्बरियां थी, जिन पर आदिवासियों पर काम हुआ है। मुझे भी जाते जाते एक उपन्यास की याद आ रही है जो संजीव जी ने लिखा था, जंगल जहां शुरू होता है। वो भी उपन्यास इसी आदिवासी समाज पर स्थित है। यस सर, योगेश सर जी, यू आर म्यूट सर, you are unmute sir, please mute. Thank you very much, sir, for present your views about this last session. Sir, today 1 minute sir. हाँ सर, मैं नारायण सर 1 minute, तिवारी सर जी बोल रहे हैं। हाँ, आपने जंगल जहां से शुरू होता है का जिक्र जो किया है, यस, ये दुसाध लोगों पे है। यस, और दुसाध जो लोग हैं बिहार के, वो ट्राइब्स ना हो करके दलित वर्ग में आते हैं, दलित वर्ग पर आते हैं। संजीव जी के धार उपन्यास को लें तो जरूर धार उपन्यास आदिवासी केंद्रित है। मैंने जिक्र किया था कि संजीव जी का फांस उपन्यास 2016 का सावधान नीचे आग है और धार, ये उपन्यास आदिवासी उपन्यास है, लेकिन जंगल जहां से शुरू होता है वो एक दलित वर्ग को लेकर के वो लिखा गया। उसमें एक पात्र केवल आदिवासी आता है, जो कि वो कहीं आदिवासी और कहीं, मैंने इस चीज का भी जिक्र करते हुए आगे आपको बताया था। संजीव जी की बहुत बड़ी बड़ी कृतियां हैं, इसमें आप उनकी धार पढ़िए। तो सावधान नीचे आ गए और उसी की अगली कड़ी धार आई थी। यस सर, तिवारी सर जी, मेरा एक्चुअली सब्जेक्ट ज्योग्राफी है। मेरे जो कलीग है यहाँ पर गोरपड़े सर जी, उन्होंने एक माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट जो यूजीसी को सबमिट किया, वो इसी उपन्यास पर थी, इसलिए हमारा जब बहस चलता था उस उपन्यास पर। बिहार और नेपाल, उस उपन्यास का जिक्र है वो बिहार और नेपाल का। जैसे ही उसमें असल में जो कथाकार संजीव जी हैं वो खुद कुमार के रूप में वहां उपस्थित हैं। यस सर, यस सर। जो डीआईसी है वो कुमार खुद संजीव कुमार जी हैं। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। भूल गया था कि ये जितने उपन्यास आदिवासी केंद्रित आए, कहीं ना कहीं इन उपन्यासों में लेखक स्वयं मौजूद है। चाहे वो महुआ माझी का मरंगोड़ा नीलकंठ हुआ क्यों ना हो, अगर महुआ माझी का मैं मरंगोड़ा नीलकंठ का जिक्र करता हूं तो प्रज्ञा नाम से जो स्त्री है वो महुआ माझी ही है। सबका सार यही है कि आदिवासी का इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल प्रोग्रेस होना, उनमें रिफॉर्म होना, उनमें से चेंज होना। इसलिए नए नए जो ट्रेंड्स है, नए नए मेथोडोलॉजी है कि जिन्हें आपने वो करंट प्रवाह में उनको लाना चाहिए, यही जिक्र होना चाहिए इस सेशन में। और आप जो बहुत उपन्यासों की एग्जाम्पल दिए, बहुत उपन्यासी की यहाँ पर आपने आदिवासी, दलित साहित्य, स्त्री साहित्य, ग्रामीण साहित्य, उन सब पर आपने बहुत बहस करे। और यहाँ से
मैं एक बताना चाहता हूँ आदिवासी की जो दो स्थिति है, एक पलायन और दूसरा विस्थापन। विस्थापन जो होता है, अब जो आपने कहा कि झारखंड और छत्तीसगढ़ में पलायन हो गए हैं आदिवासी लोगों की ज्यादा से ज्यादा, लेकिन विस्थापित संस्कृति टूट जाती है विस्थापित से, सही है, विस्थापित से संस्कृति टूट जाती है और झारखंड और छत्तीसगढ़ में पलायन आदिवासी का ज्यादा हो गया है। सर मैं इस विषय पे मैं कहना चाहूंगा, पलायन और विस्थापन दो अलग अलग चीजें हैं। सही है। पलायन वो है जैसे हम उत्तर प्रदेश से थे, साधन और नौकरी के चक्कर में उत्तर प्रदेश छोड़ करके हम सोता है उत्तर प्रदेश छोड़ करके मध्य प्रदेश आ बसे, ये पलायन है। लेकिन अगर हमें कोई यहां से खींच करके बाहर कर दे, ये विस्थापन है। फिर भी आदिवासियों का अपना भूमि पर जो प्रेम रहता है वो वहाँ विस्थापित नहीं होना चाहते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो बहुत 3 घंटे, लगभग 3 घंटों से चल रही है वेबिनार। इस वेबिनार के जो आयोजक है सोशल कॉलेज के प्राचार्य माननीय तंबोली सर जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस वेबिनार के जो कन्वेनर है हमारे मित्र डॉक्टर राजगुरु सर जी, को कन्वीनर डॉक्टर दीपक नारायणकर सर जी, उनका भी धन्यवाद ज्ञापन। और पूरे जो सोशल की इस वेबिनार में काम लगे, सो जो नॉन टीचिंग, टीचिंग और ऑल जो मेंबर्स है, और इसका इन सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और ये सेशन आज का जो 4th सेशन है, लास्ट सेशन, वो मैं जो प्रेसिडेंशियल रिमार्क है वो एंड करता हूँ। धन्यवाद सर जी, धन्यवाद। धन्यवाद। मैं इसमें संतोष माने जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म उपस्थित कराया जिसमें हम लोगों ने, सभी लोगों ने चर्चा अपनी प्रस्तुत की। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंसिपल सर, संतोष जी और जितने लोग संगोष्ठी में जुड़े हैं सभी को। धन्यवाद सर, धन्यवाद। नेक्स्ट वी हैव वैलिडिटी फंक्शन। बहुत बहुत सराहनीय कार्य जो मंच मिला और सार्थक डिबेट हुई। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि सभी बिंदुओं को मतलब टच किया गया। पहले व्याख्यान, दूसरे व्याख्यान, तीसरे व्याख्यान और चौथे व्याख्यान, सभी व्याख्यान अपने आप में मतलब यूनिक रहे और सभी एक दूसरे को जोड़ने वाले रहे। ये एक संगोष्ठी की बहुत बड़ी उपलब्धता है। कई बार एक ही विषय पर 25 चर्चाएं हो जाती हैं और बातें दोहराती हैं। इस संगोष्ठी की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि कोई भी बात दोहराई नहीं। ये एक सार्थक मतलब सार्थकता रही इस संगोष्ठी की। Thank you very much, sir. Today we have the next session is validity function. Today we have already late. A very warm good morning to all. Gallery of intellectuals, invite guests, dignitaries, students, and my colleagues. I am Dr. Deepak Narayankar, Department of Geography, Social College. Take this opportunity to welcome each and everyone you to the validity function of e-conference on recent trends, research methodology in arts and humanities, organized by IQAC Department of Geography, Social Science of Solapur Social Associations, Arts and Commerce College of Maharashtra, India. Let me first acknowledge the presence of some of our humanities guests. It is indeed our pleasure to have among us the chief guest of the validity function, Dr. Dhanasri Shinde ma'am, Associate Professor, Department of Geography, Shivaji University, Kolhapur, and the President of this function, Principal Dr. I.J. Tamboli sir, and the guest dignitaries and participants. Welcome. Now I request Dr. Rajguru sir for the introduce to the chief guest of today's validity function. Hello. Good afternoon. I am very grateful to introduce Dr. Dhanasri Shinde madam. She is working as Associate Professor, Department of Geography, Shivaji University, Solapur. The education qualification of ma'am, MA PhD, and the teaching experience 22 years in PG and UG. The
Geography is the specialization subject of the PhD madam. She has 30 papers present in national and international conference, 11 research 11 research papers published in national and international conference, 4 books written and published by the man, 1 student research guide to the man, and 5 national and international awards to give the man. Ma'am are members of different organizations, national and international. Ma'am, please give valedictory valuable speech in this international e-conference. Thank you. Thank you very much, sir. Now I would like to invite Honorable Chief Guest, Dr. Dhanashree Sindha ma'am, Associate Professor, Department of Geography, Shivaji University, Kolhapur, to address the conference. Please address the conference. Thank you, organizers of the function. I am extremely thankful to all of you for allowing me and inviting me as a chief guest. To start with the valedictory function, it's my style to make a presentation. So I'll just start with the presentation. Is the screen visible to all of you? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yeah. So thank you very much for calling me as a chief guest in this recent trends and research methodology in arts and humanities. It's a valedictory function. The main importance of the valedictory function is to wind up the entire day's activities. In basic terms, now I would like to give you a winding up of the things that are present. Basically, it's on research methodology. So it is a way to systematically solve the research problem. It can be understood as a science of studying how research is done scientifically. In it, we study the various steps that are generally adopted by a researcher in studying his research problems along with the logic behind them. It is also necessary for the researcher to know the research methods, techniques, and the methodology. A researcher not only need to know how to develop certain indices or tests, how to calculate the mean, median, mode, standard deviation, or chi-square, how to apply particular research, but they should also know which of these methods or techniques are relevant and which are not, and what would they mean and indicate, and why. Researchers also need to understand the assumptions underlying the various techniques. They need to know the criteria by which they can decide that certain techniques, procedures will be applicable to certain problems and others will not. All this means that it is necessary for the researcher to design his methodology for his problem, as the same may differ from problem to problem. So the research methodology has many dimensions, research methods to constitute a part of the research methodology. The scope of the research methodology is wider than that of research methods. By talking of research methodology, we normally talk of the research methods, also consider the logic behind the methods we use in the context of our research study, and explain why we are using a particular method or technique, also why we are not using others, so that the research results are capable of being evaluated either by the researcher himself or by others. So why a research study has been undertaken, how research problem has been defined, in what way and why hypothesis has been formulated, what data have been collected, what particular method has been adopted, why particular technique of analyzing data has been used, and a lot of similar other questions are usually answered when we talk of research methodology concerning a research problem or study. So this is about the research, and then thank you for the calling me as a valedictory function. I know all of you are quite aware of and quite bored probably from the beginning
So my research validatory function, from my point of view, I've completed with the valedictory remarks as a basic component of the research problem and research methodology. Basically, thank you all of you for calling me as a chief guest for this function, and I'm extremely thankful for all of you. Thank you very much. Thank you, ma'am. Your words is indeed a source of motivation. Thank you, ma'am. Now, moving on, I now request the president of the function, our senior professor, Dr. A. Gadwal, sir, please deliver the presidential remark. मैम अपनी स्क्रीन बंद कीजिए, आपने जो शेयर किया है स्क्रीन अनस्क्रीन कीजिए मैम, अनशेयर कीजिए मैम, शिंदे मैम। Thank you, ma'am, for being with us. Next one, Doctor. Next one, Doctor. Next one, Dr. D.S. Shinde, madam, for being with us for the valedictory function. Madam, we are thankful to you for giving the important tips on research methodology. I thank all the resource persons, Dr. Praveen Saptarshi, Dr. Sunil Kumar Manas, Dr. Advi Tote, Dr. Vegesh Kumar, and our last and our valedictory chief guest, Dr. D.S. Shinde, madam, and all the participants, etc. Thank you very much, sir. We have now reached the end of the validity function. There is an end to everything, but we believe there is never an end of, but always a beginning. Everyone has a talent. What's rare is the courage to follow it. If you are not prepared to be wrong, you will never come up with anything original. On this note, let's conclude a remarkable and memorable and knowledgeable validity session. On the behalf of our institution, we sincerely thank the dignitaries from beginning with us, evening and enlightening us. Now I request to our IQAC coordinator, Professor J.K. Mullah, to deliver the vote of thanks of the all session. Before that, I request to all participants, keep on your cameras for the screenshot. I request to all participants, keep all cameras on for the screenshot. Thank you, Dr. Naran. Thank you, Dr. Narankar, sir. Solapur Social Association Arts and Commerce College Solapur has organized International E-Conference on Recent Trends and Research in Humanity. Today, Thursday, 18 January 2022, we are here gathered for the International E-Conference since from morning 10 o'clock. Inaugural function is chaired by Dr. Praveen Saptarshi, sir, who has given a valuable information regarding the research methodology and the methods of research and what are the lacunae in the research over there. He has given a valuable information to us. On behalf of Solapur Social Association Arts and Commerce College, on behalf of principal and teaching and non-teaching staff, I am very much thankful to Praveen Saptarshi, sir, visiting professor, Salisbury University, USA, for giving a valuable information regarding the recent trends and research methodology. Second section has been delivered by Dr. Sunil Kumar Manas, sir, and chaired by Sangmeshwar Neela, sir. Thanks to both of them for valuable discussion on the Samkalin Chintan Shodh Patrika Tana Bana. They have discussed a very well manner. On a third session, I am very much thankful for the delivering a lecture on recent trends and research methodology in geography to Dr. S.C. Advitote, sir, Professor, Head of Department of Geography, Khedgi College. And also, I am very much thankful for the Dr. B.B. Rao, sir, for their chairing that particular session. And the third session has been delivered by Yogesh Kumar Tiwari, sir, who has given the valuable information regarding the tribes in India, Adivasi Samaj ki Sadhya Sthiti. And this session is chaired by Dr. Harwadkar, sir. And in today's valedictory function, we have a very famous chief guest, Dr. D.S. Shinde, ma'am, who has given a valuable information regarding the research methodology.
On behalf of Solapur Social Association, Arts and Commerce College, I am very much thankful for all the participants across the globe who has participated from India and abroad and made this international conference a successful one. I wish all of you a very success in the future in the research, and this fruitful information will always will give us a very nice thing for the future. Thank you very much. And also thanks to conference coordinator Dr. Rajguru sir, and also assistant coordinator Dr. Gadwal sir. And also it is possible only due to the principal who has given a valuable motivation to us for conducting this session and this seminar, Principal Dr. I.J. Tamboli sir. And also I like to thank you all the teaching and non-teaching staff who has actively participated in this particular e-conference and who has taken endless effort for making this e-conference a successful one. Thank you all of the person who are contributed frontly and backly. Thank you all of us. Thank you. Thank you very much, sir. The end of the conference with national anthem. To request Dr. Santosh Mane sir to play the national anthem. To stand up, everyone. Feedback link, sir. Link also will be shared within few minutes. शुभ आशीष मांगी गाहे तव जय गाथा जनगण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय 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 हे Thank you. Mane sir, please share feedback form to all participants. Thank you, everyone. Thank you so much, all participants. Thank you, sir. Professor, students. सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you. सभी